Hello, hi, Isha ma'am. How are you? I hope I'm audible. Hello, good evening, sir. Yes, How are sir. you? Hello, Hi, Isha ma'am. How are you? Good evening, sir. how's everyone? Kuch, Fine, sir. hi, Devanand. How's everyone doing? Great, all Fine, sir. well. All good. Dara, after yesterday, someone tried something. I did. What did you do? So I tried this chakra balancing on my husband. So I tried with the crown first and the throat. He didn't feel anything, but when I did it for the heart, he could feel a little lighter. So he said, "सर पे उस पे नहीं हुआ, but to the heart I felt little light." तो जो भी हुआ मतलब कुछ हुआ. Like he was So not I scared did of you, man. something. He was not No, scared. he did I not. got जा no, नहीं what are सकता you ना. doing? तुम मेरा गला दबाना चाहते हो या क्या कर रहे हो? जब आपने बोला ना लॉकडाउन है भाग तो सकता नहीं पकड़ लो यहीं पे काम करवा लो जितने एक्सपेरिमेंट करने Yes, हैं. yes. So, this is a good time to learn things, because you don't need to travel. Travel time. आज मैं सोच रहा था, like, when I used to do the classes with people in front of me, तो वो कितना टाइम लगता है और कितने लोग कर नहीं पाते because of their job, business, because we can't teach. जो कुछ कर रहा है वो जॉब कर रहा है, business कर रहा है, वो तो कुछ सीख ही नहीं सकता. Right. So everybody says that travel time. Literally, एक मेरा energy healing session था. I was traveling somewhere. I was coming home and I got late. My car broke down, something happened. So I logged on to my mobile on the road. My car was not working and I said, I have to do this. So, that's the benefit of technology or traveling. We are saving the time. So I'm just Yes, we did. ये नहीं होता तो सर शायद ये सीखने का भी इतनी पेशेंटली टाइम नहीं मिलता. We won't have got this. because physically आपका आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है. So I'm just waiting for more people to join in as well. And अभी आ रहे हैं धीरे धीरे. आज सरप्राइजिंगली मैं बिल्कुल आई थिंक टाइम पे आ गया हूँ. हाय मोहिनी जी, हाउ आर यू? अभी just open now, I think. हाँ जी, Yeah. हाँ. Hi. Yeah, I'm good. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू. एक्चुअली जिसका कैमरा दिखता है ना तो उससे बात भी हो जाती है. अभी इतने लोग दिख नहीं रहे हैं. पुनीत जी, आज आपका Right. कैमरा नहीं ऑन है. सोनल जी, ईशा जी, so many people. I'll have to call you guys by name, only then you're going to switch on your cameras. Don't be shy यार, it's okay. I have not had an haircut since 2 months and वैसे भी इसमें इतना सा छोटा सा इमेज दिखता है. So it doesn't matter even if you've got puffy eyes or oiled hair or whatever, so it doesn't matter. What matters is the crystals right now, so वही दिख रहा है बस. और कुछ दिखता नहीं है, इतना छोटा सा विंडो है. Don't worry. So where were we yesterday? If somebody remembers, where we left. Right, so I'm trying to figure out Isha ji. I'm trying to figure out how to start sharing the screen, chat, meditation. Give me a second. How to place crystals, right? Great. Share the screen.
my screen visible? Yes, sir. Screen sharing is paused. Resume share. Not able to share this. अभी आपको ये word file दिख रहा है, which I am rotating up and down. I'm not able to share. Yes, we can see the file. This file crystals cleansing जो yellow में highlighted है ये वाला. What can you see? Can you read what you're seeing? Because I am not. No, sir, it's stuck. Colors, meaning, property, forms, placement. हाँ नहीं वो गलत है. Okay, let me figure out. New share. I think now we are able to see, right? Yes. Right, great. So just to sum up, day one, we were here, we did the crystal colors and placing it on the body. Practically Isha ji ke help se humne कराए. And now let me give you an idea about healing with music. अब आप जब ये ambience आपने बनाना है, जब when somebody is lying down or you're doing the crystal healing on yourself, so it's better as an added thing to play some relaxing music. So वो आप online भी देख सकते हैं, otherwise I'll share it. It does not need to be very overwhelming or very active or very loud या बहुत ज़्यादा sound के बीच में. It's more of serene, natural. और अगर कुछ भी समझ ना आए, if there is nothing that you're getting confused, maybe too many bird sounds or something, just go for the instrumental piano music. वो बहुत help करता है. जैसे अभी मैम ने बताया कि she did yesterday for her husband, स्वाति जी ने बताया, right? तो क्या होता है कि कुछ और आवाज आ रही है या फोन बज रहा है, मैसेज बज रहा है या कुछ भी, तो if you create that zen moment, whereby there is some mild music playing, so you tend to focus on what you're doing. Even the person whom you're doing it for, उसको भी और distractions नहीं होगी, वो mild music में tied up रहेगा और बाकी आपके process में रहेगा, right? So yesterday I also spoke about water that you can drink. Crystal को now up crystals का there are unlimited uses. This is the single modality that I know which you can accompany with almost every other modality possible. And इसमें एक ही चीज के usages बहुत ज़्यादा है. Like a crystal, अभी तक हमने crystal के क्या-क्या use सीखे. हमने सबसे basic सीखा कि वो हमारे chakras के लिए है. दूसरा हमारे को अच्छा लग रहा है, हमने we are holding on to it. Somebody was telling me I just hold on to it and I feel nice. And the other usages that I hinted was jewelry. और जो आप लोगों ने ग्रुप में भी अगर देखा होगा तो उसका बॉल, पिरामिड, स्फीयर, राइट? So there is lot of uses. Keychain, earrings, उसका boxes बनता है, those type of things. So now the other one more uses that it can be used to drink. What that means is that there are many ways of it. मतलब आप ये crystal है, तो इसका एक energy field है, इसका एक aura है, because it's a vibrating crystal. The crystal which amplifies energy. So to take the energy internally, आप बाहर अपनी बॉडी पे, ऑरा पे और चक्रा पे इसको यूज करने का आपको एक प्रोसेस आ चुका है. I told you how to use this on your chakras. I told you how to use this on your aura, and how to use it in the normal life. You're wearing it as a bracelet, you're wearing it as a ring, something in the ear, in the neck. Now how to use it internally. You cannot eat this, right? So there is a thing called making elixir or water out of the crystals. Now, first of all, you don't have to make any elixir or any water from any raw crystal. This is very important. Usually, I don't want you to write anything, but if this thing you want to write, if I see a lot of people writing, they should write it. Never use a raw crystal to make any water. Please mute everyone. Yeah. Do that, yeah, please. So कभी भी कोई भी रॉ क्रिस्टल का आपने पानी नहीं बनाना है. उसका रीजन क्या है कि ये रॉ है. सो इसमें से मिट्टी है,
chemical है, compounds है, it's a part of earth. So compounds or the earth or the minerals or the chemicals will dissolve in the water. For almost any crystal कुछ ना कुछ निकलेगा. कोई आपके पास भी क्रिस्टल होता है, वो गिरता है तो उसमें से कुछ निकल जाता है ना, मिट्टी और उसका पाउडर और व्हाटएवर, और ऊपर से गिरता रहेगा. सो स्पेशली क्रिस्टल्स लाइक ब्लैक टॉर्मेलिन एंड क्रिस्टल्स लाइक सेलेनाइट. अभी काफी लोगों को सामान पहुंचा है, उसमें पोस्टर आया है सेलेनाइट का. सो लॉट ऑफ पीपल शोड दैट पिक्चर टू मी कि सर ये सेलेनाइट आया बट ये टूटा हुआ है. सो आई एक्सप्लेन्ड कि दिस इज हाउ द टेक्सचर ऑफ सेलेनाइट इज. वो इट्स लाइक फ्लेकी. This is how the texture of black tourmaline is flaky है. So you've bought it in any form, उसमें flakiness रहेगा और ऐसे हल्का हल्का उतरेगा, चाहे वो कोस्टर है, चाहे वो कोई भी फॉर्म में लिया आपने. Especially for 2-3 crystals that I'm talking about right now, black tourmaline, selenite, and some other crystals, azurite of the same family. So don't need to dissolve it in water. You can take a bath with it, put it in a bathing water, take it with you in the bathing tub or something. That is fine. But you are supposed to use tumbles. What does a tumble mean? Tumble means कि वो एक raw piece होता है जिसको कि polish कर दिया जाता है, तो उसकी जो भी flakiness है वो एक तरीके से खत्म हो जाती है, ऊपर से उसको buff कर दिया जाता है. So this looks very shiny, more attractive. Like see, like this is tiger's eye. This is looking like a dull piece of rock, but once it is shined, it starts looking like an eye. Looks like a cat's eye, tiger's eye. Yes, जैसे Swati is showing. What crystal is this? This is tiger eye only, I think. Which Yes. Now I can see. Yes, This- that's tiger eye. So do you see the difference? What I am holding and what she is holding. This both is tiger's eye, but rough. My is not polished. The crystal that Swati is holding is polished, right? So that is the difference, polished और non polished का. तो आपने पानी के लिए कैसे करना है कि आपने, because अभी भी even till today or even after tomorrow, you will still be very new to this. You've learned it, but you've not done it practically. तो गलती हो सकती है, right? So what you can do is bare maximum is take a tumble. Be sure, because tumble में भी मिट्टी तो निकलेगा ना, अगर वो भी टूट सकता है. So just put it in water and then water को आप छान लीजिए and you can drink that water. You want to say something, Swati? You saying something, Swati? Acha, I thought you wanted to say something. So this is why this is done. If you are really unwell or somebody is really unwell, so you, or maybe आपसे दूर है और आपने सब कुछ कर लिया है, but the बीमारी is such that maybe it's mental or physical or there is some emotional issue. So this is another way of having this, because this is a master healer. This is amethyst. तो amethyst में आपने पानी डाला तो आपको healing के लिए आपको help कर रहा है. And remember, these are all alternate therapies. जैसे कई लोगों को दवाई लेना नहीं पसंद है, but we will always say that take your medicine, go to your medical doctor and do. These things are all alternate because these are not proven in any way. Okay, these are proven in certain scientific ways, but they are not, on the line of allopathy or homeopathy or something. So that is the reason they are called alternate sciences or mystical sciences, occult science. So these are alternate ways कि just पानी डाला आपने उसको छान के आप पी सकते हो. So this is for like good health. Now black tourmaline, where does black tourmaline come? If anybody could tell me कि भी आपने amethyst का पानी क्यों पिया? Because वो एक master healer है, आपको good health के लिए पीना था. अब आप black tourmaline का पानी क्यों बनाएंगे? Grounding. Protection and grounding. बोला protection and grounding. That's what you said. Puneet, आपने क्या बोला? Grounding. Right. And anyone else, I would really like some other people to participate. Yeah, अपनी आवाज ही सुना दीजिए. आप लोग चेहरा नहीं दिखा रहे तो I can just take out the name Shilpa, Reenu, Snehal, Bhavna, Sushma, Sonal. ये मुझे वो नाम है जो मेरे को याद है because chat में बात हुआ है कहीं ना कहीं. To kill negativity. Yes, that is a good answer. Yes. To absorb negativity, so maybe it can be flushed. Right. Saviji, you want to say something?
Yes, sir. I have this tiger eyes crystal. Great, Raw. great. Right. Yeah. That's nice. Yeah, I have something similar. Yes. Okay. So black tourmaline ka, it is good for grounding. It is good for negativity, and people who come to you and say कि यार मेरे ऊपर तो कोई black magic है या मेरे ऊपर बहुत negative आ गई है, black hex है या मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है. So black tourmaline again. So then again you use a tumble of black tourmaline, put it in water for few minutes. Just उसको छानना better है पानी को, because I want it to be very safe. आपने उसको छान लिया and you drink it. So that is how it is made. Primarily for every crystal, that is how it is made. कि आपको internally भी अगर वो crystal का energy चाहिए, और ज्यादातर आपको amethyst का ही बनाना चाहिए. Because this is a master healer for almost everything. This is the healer. So don't try to get into other type of waters right now. The only water that I would recommend for each and every one of you to try for yourself or anybody is amethyst. You take it in the tumble form. Amethyst पानी में आपने डालिए, निकालिए, and आप उसको drink करिए. उससे take bath भी कर सकते हैं और आप घर की सफाई भी कर सकते हैं. Because we are trying to take the aura energy of the crystal in the water, and we are trying to use it on us by taking a bath with it, by drinking it, by cleaning the house. And there is another way of using this. Say for example, you have a spray bottle and you put some crystals in the spray bottle, right? और आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, wherever you are, अपने aura के लिए भी आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं. So anybody would have any idea that what type of crystal would you like to use in your spray bottle? आपका पर्पस है आपका ऑरा पॉजिटिव रखना, घर सब क्लीन रखना, एरिया पॉजिटिव रखना. That's why you're putting it in the spray. You want to spray it in different places, right? Black tourmaline. Selenite. Pardon? Black tourmaline के Selenite, rose quartz, Clear Selenite, sir. quartz. Clear quartz. clear quartz is quartz. the best option. Clear quartz is Clear the quartz. best option because clear quartz is the first crystal. It's First like form, yes. so it is for positivity. तो आपको Yeah. पॉजिटिविटी हर जगह चाहिए ही चाहिए. तो ब्लैक टॉर्मेलिन भी, ब्लैक टॉर्मेलिन ज्यादा इसलिए नहीं डालते कि रॉ में ज्यादा गल जाएगा, तो हमने तो टंबल ही यूज करना है. तो ब्लैक टॉर्मेलिन ठीक है, आप नेगेटिविटी हटा रहे हो, बट चाहिए अगर पॉजिटिविटी इन दी एंड, तो हम व्हाइट वाला व्हाइट क्वार्ट्ज यूज करेंगे, तो इट इज गुड. एंड सेलेनाइट इज अ क्रिस्टल विच you should never put in water. Selenite is a master cleanser. It is a master charger. So this is another, जैसे master बहुत कम crystals के लिए use करा है ना मैंने. I used master for amethyst, master healer. I use master healer for the white quartz. Now this is a master cleanser and a master charger. Selenite. Why? Because this crystal, as per the understanding, as per the saying, as per the knowledge, this crystal never needs charging. इस crystal को life long आपको मून वाटर में डालने की जरूरत नहीं है, इसको क्लेंस करने की जरूरत नहीं है, इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है. प्रोग्रामिंग तो you can do for anything because you're telling the crystal what to do for you, right? So this is a master cleanser. इसका अगर आपने देखा हो, मैंने बहुत सारे कोस्टर्स आपके ग्रुप में डाले और सब लोग, काफी लोगों ने उसके कोस्टर्स लिए. तो व्हाई इसका कोस्टर सबसे ज्यादा? बिकॉज यू कैन कीप योर फूड ऑन इट, यू कैन कीप योर वाटर ऑन इट, यू कैन कीप एनीथिंग ऑन इट, you can literally sit yourself on it because it will help in your chakras for the cleansing, you know, and it basically cleanses the crystals of, you know, all the cleansing required of after a lot of time. Charge नहीं करेगा but cleansing जरूर कर देगा. चार्ज में हेल्प करता है, बट अदरवाइज क्रिस्टल्स को चार्ज करने का तरीका और है. सो क्लेंस हो गए, आपका बॉडी क्लेंस हो गया, आपके चक्रस क्लेंस हो गए, फूड क्लेंस हो गया, चार्ज हो गया इन द सेंस कि इट्स क्लेंस, इट्स क्लीन, इट्स आउट विदाउट एनी नेगेटिविटी और समथिंग. तो इसको पानी में नहीं डालते बिकॉज ये डिसॉल्व एकदम से तो नहीं होगा, बट इट विल कम आउट, इट विल स्टार्ट फॉलिंग. इसका चाहे रॉ हो चाहे टंबल हो, तो सेलेनाइट यू डोंट नीड टू पुट. सो ऐसे ही और क्रिस्टल्स भी हैं दो चार, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको पीडीएफ वगैरह में, कि वो पानी में नहीं डालना है कभी भी. उसको उसका कुछ एलिक्सर पानी वाटर नहीं बनाना. सिंपल पानी वाटर आपने बनाना है एमेथिस्ट, व्हाइट क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मेलिन. डोंट गेट इनटू एनीथिंग एल्स राइट नाउ. 3 crystals, very simple to remember and very easy to use. These are the basic 4-7 crystals में से 3 बताए हैं. और टंबल ओनली,
Don't go for the raw to put it in the water, right? So this is how we are taking the water inside. We are using it to spray in our house for our aura and for our washrooms and other areas, kids' rooms. You know, Sir, can you repeat the names? Clear crystal and clear quartz, that is called Yes. white quartz. Clear quartz, white quartz. Then amethyst. Amethyst is the master healer. This is amethyst. And black tourmaline, right? But only tumbles, the polished form, not the raw form. वो उसमें पानी में आएगा. So I don't want you to even experiment. It's not necessary to drink this water. I am just telling you this thing because this is आपको बाद में पता लगेगा तो आप बोलोगे मुझे बताया नहीं, because this is a very regularly practiced process. So I want you to have the knowledge, because अगर knowledge नहीं होगा आप गलत करोगे and half knowledge will harm you. So at least I have given you the correct knowledge. So at least आप उसको या तो use ना ही करिए या फिर सिर्फ ये 3 तरीके से simply करिए आप. Sir, I have a sorry. question. Yes. Can we use this crystal in oil so that we can massage the part which we have pain? Matlab, I am coming to that. That is a part Okay, of sorry. today. I will tell you that. Sir, And I sir, have while- a question. How long should we place it in the water, sir? What is the time? 4-5 minutes. I did mention it कि उससे ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं है, because अभी मतलब the point is that it's not required more than that. That's it. Because the crystal that you are supposed to put in it is supposed to be cleansed, it's supposed to be charged, and it's supposed to be programmed. So आपको कर क्या रहे हो? In the end आप short में क्या कर रहे हो? आप जो वो crystal जिस चीज के लिए programmed है और उसका जो aura है positive, आप उस aura को पानी में ले रहे हो. Because water also, yesterday I think if you guys remember, somebody also asked this question कि sir water भी crystal है. So I said water is a very good retainer of memory. आप उसको negative energy दोगे वो negative taste करेगा, थोड़ा सा अजीब सा taste करेगा, और वही water को आप positive energy दोगे तो वो अच्छा taste करेगा. It will taste better. So it stores the energy. And I told you how to charge your own water. For anything you're eating or drinking, you keep your hand and give your positive intention, and it will work for that. कि हाँ मेरी health अच्छी है. Don't use any negative words कि मेरे को सर दर्द नहीं है, मैं बहुत relaxed हूँ. If there is no phrase that you are able to understand, तो ठीक है, you can say मेरे को सर में सर दर्द नहीं हो रहा, relax दे रहा है. But the point is to try and use more positive affirmations, you know, while charging the water or anything. Like you food भी आप खा रहे हो, so just thank it, you know, कि हाँ खाने को मिल रहा है. अगर आपको 4 दिन खाने को नहीं मिलेगा ना, तो you will eat stale bread also. So we need to be thankful at least पानी खाना मिल रहा है. So that's really important. So one of the ways I've told you how you can use it as a water for your aura, for your house. And then the next is you can take a bath with these crystals, you know. Like there are certain crystals, a lot of people get so much attracted कि उनका मन करता है हर वक्त अपने साथ लेके चलूं. Lot of people come up to me and say, you know, I always have this in my bag. I always have this in my pocket. You know, I also carry a pouch. I have my favorite crystals in the pouch. I have my favorite rings in the pouch, which, you know, because I cannot wear all the rings all the time. So sometimes I'm wearing something, तो साथ में लेके चलता हूँ. तो ये favorite हो जाता है. तो how you can take a bath is you can put it in your, you know, in the bucket. Take a bath with that water. Use it as a shower head. जो अभी मेरे पास खत्म है, मैं आपको दिखाऊंगा. Shower के ऊपर भी लग जाते हैं. And put it in your tub, or and then put it in your washroom. You can put the crystals in your washroom. अगर कई washrooms में बहुत सिलन, you know, एकदम गीला गीला सा feeling ही रहता है हमेशा, या बड़ा negativity सा रहता है, you know, it's not very comfortable when you're in the washroom. So you can start putting positive crystals, you know, like soft loving crystals like white, pink, this type of crystal, which gives you that feeling of warmth and feeling of love. Because you don't want to be too much in the washroom, but you don't want to be running out of it. Uncomfortable भी नहीं लगना चाहिए. और ये होता है, काफी washrooms में होता है. अगर वास्तु खराब है या कुछ भी placement खराब है, and otherwise there's a lot of negativity, so that happens in the washroom. So now how you start incorporating, while I'm telling you other things, in a way I'm telling you how you are incorporating this in your entire life. आपको क्रिस्टल कहाँ कहाँ रख सकते हो. अब आप वॉशरूम भी एक जगह है जहाँ पे रख सकते हो क्रिस्टल. और वहां पे जैसे अरोमा ऑयल्स क्यों जलाया जाता है वॉशरूम में,
इसी पर्पस के लिए, टू कीप दैट फ्रेशनेस, टू कीप दैट पॉजिटिविटी अराउंड. सो यू कैन यूज दीज क्रिस्टल्स ऑल्सो इन द वॉशरूम. और उसमें आप कोई भी फॉर्म रख सकते हो, वो आपको जो सुंदर रख रहा है. लॉट ऑफ पीपल कीप ट्री, यू नो, these type of trees in the washroom. Ball थोड़ा टूट सकता है, so just try to, you know, keep the practical things in the washroom. Then Sir, should we keep these crystals in the bucket itself, like, or should we remove it after we take bath? हटा दीजिए, मतलब it's yours. If you want to take bath with it every time, it's okay. Let it be in the bucket, doesn't matter. There are certain crystals which are good for skin. जैसे रोज क्वार्ट्स अगर आपको वार्मथ और लव और हार्मनी देता है, साथ में गुड स्किन के लिए भी गुड है वो. Well, it's a good crystal. So you supposedly you're using a rose quartz, or there is a crystal called एफोफलाइट. एफोफलाइट का जो क्रिस्टल है वो और बहुत यूजेस है. उसका एक यूज है स्किन एलर्जी या स्किन में कोई भी स्किन एलर्जी, स्किन इशू. एफोफलाइट, तो वो क्रिस्टल आप वॉशरूम में ही पड़े रहने दो. आपके पास एक्स्ट्रा है या वॉशरूम के लिए ही लिया है तो वॉशरूम में ही पड़े रहने दीजिए. यू कैन टेक अ बाथ विद इट. और यू जस्ट वांट टू कीप सम क्रिस्टल, आपको रोज क्वार्ट्ज अच्छा लगता है, टाइगर क्वार्ट्ज अच्छा लगता है, आप वॉशरूम में ही रहने दो. एंड यू कैन यूज दिस एज अ फुट स्क्रबर आल्सो, डजंट मैटर. दीस क्रिस्टल्स आर नॉट गोइंग टू गेट एंग्री विद यू if you step on them or if you use them on any part of your body. And if you like this piece, you feel that you can use it as a foot scrubber, then go for it. You know, you can do it. And say for example, yeah. Sir, how often should we replace these from the bucket? I mean, आपको for how long will this be effective? परमानेंट गीला नहीं रखना है. आप एक दफा नहाओ, वो सूख जाएगा, आप पड़े रहने तो doesn't matter. But you don't have to let them be in the water always. Any crystal, don't let it be in the water always, because in the end it is not a glass or it is not an iron or steel. ये मिट्टी, केमिकल और कंपाउंड्स का ही बना है, तो पानी में ये मिक्स हो जाएगा आज नहीं तो कल. राइट? ओके सर, ओके. बस गीला एक दफा नहाए आपने, आपका काम हो गया. आप उसको बाहर रख दो, सुखाने दो या उसको पड़े रहने दो, बट पानी से निकाल दो. Okay. Sir, how often, I mean, how long would it remain effective? I mean, it's like, how often should we replace these crystals? There is no life. As long as the color is good, it's fine. Okay, sir. If the color goes low, that means that उसका positive vibration कम हो रहा है, तो आप बदल सकते. Okay, sir. Thank you. और ज्यादा देर अगर धूप में ना पड़ा रहे, रोज जैसे बार बार धूप में नहीं रख रहे, बार बार ओपन एयर में नहीं रख रहे, तो लंबा चलता है. ऐसे इसका लाइफ नहीं रहता. जैसे gemstones का लाइफ इज लाइक यूजुअली 3 years to 6 years for the gemstones that we wear in the rings. But इसका क्रिस्टल्स का ऐसा रेलेवेंस नहीं है. बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट एज अ जेमस्टोन, आपने भी उसको रिंग में पहन लिया, गले में पहन लिया, तो वो धूप और बाहर सब में लग रहा है ना बार बार, सो उसका वो कलर उड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका कम होगा. तो वही तब उसका लाइफ वही 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल रह सकता है. So what are the crystals that you would recommend for bath other than rose quartz? You can take bath with any crystal. बिकॉज आपको उस क्रिस्टल से बात लेने का पर्पस क्या है? आपको उसका पॉजिटिव ऑरा चाहिए, आपको ग्राउंडिंग करना है. आप ब्लैक क्रिस्टल से नहाओगे, आपको लगता है आप में एनर्जी कम है, आप रेड से नहाओगे. आपको हार्ट का चक्रा का लग रहा है, आप येलो से नहाओगे. यू टॉकिंग अबाउट लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, और जस्ट वांट टू फील वेरी रोजी एंड यू नो वेरी हैप्पी गो लकी, तो पिंक से नहाओगे. कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पर्पल और व्हाइट से नहा लो. Okay, sir. So, is there any procedure for disposing the crystals? I mean, once they are frayed or something? मिट्टी में दबा दीजिए. Okay. But sir, after taking bath, can we use those crystals for meditation or for? No problem. You can recharge them, reprogram them. उनको बताओ कि भाई अभी मैं आपके साथ I am taking a bath to so that my aura gets positive, or you know this thing. Now I'm using you for meditation or using you for chakra cleansing, so that's fine. ज्यादा मतलब अगर एक क्रिस्टल परमानेंटली वॉशरूम में यूज कर रहे हो तो ठीक है, उसको वहीं रहने दीजिए. बार बार क्लेंस और प्रोग्राम करते रहोगे. अदरवाइज मल्टी यूज कर रहे हो तो दैट्स फाइन, बट देन एवरी टाइम यू हैव टू टेल द क्रिस्टल दैट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट, बिकॉज इट्स अ बीइंग दैट हेल्प्स टू you know give you that positive vibration. Yeah, Juhi, I think I see your hand. Hi sir. I just have this question ki I have this angel crystals. I only have angel crystals with me. So can I use angel crystals for all these things? Tumbles ke badle? Yes. As long as वो raw नहीं है, वो polished है, तो that's fine. That's fine. ये angel therapy का पार्ट है. ये इसमें मैं इतना इसको डिटेल में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो angel therapy है.
एंजल थेरेपी का मतलब है कि हम एंजल के फॉर्म में वो एंजल के नाम से उसके कलर से उसको इन्वोक करके उसको यूज कर रहे हैं. तो इधर we are just doing the basic into advanced crystal healing. So we are not going into the angel forms, but I think I mentioned something about angels yesterday. I even mentioned the name of an angel, or I'm not very well versed with the name, so somebody helped me out over here. Archangel Raphael, Yes. Michael. So So I have a question. While bathing, can we use the crystals in raw form, or we have to use you can tumblers use it only? in the raw form also, because आप उसको पी नहीं रहे हो, आप बाथ ले रहे हो, that's fine. Raw भी So चलेगा. like they don't get absorbed by the skin root, right? No, not really. वो आप पाउडर ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा. Okay. It won't really happen. आप कितना, you're not going to be in that water for 5-6 hours, na? So Right. it doesn't matter. Okay, thank you. So you Sir, can take. I have a one question, one confusion. Like yesterday, I have used one crystal for my chakra cleansing, but today morning, suppose I take a bath out of it. So, do I need to again program it for my chakra balancing, because it is washed out with the water? Same कि for after every use you just have to tell it. आपने अगर नहा लिया, नहाने के बाद आप चक्रा के लिए यूज करो, तो just tell the crystal ना, okay, now I'm using you for the chakra balancing. So just put that intention. It's going to amplify. It's going to amplify the energy you want it to, and the purpose you say. If you, whatever purpose you're telling it, is trying to amplify it. So basically पानी से निकालने के बाद every time हमको उनको intention देना पड़ेगा. Okay. If you are doing it for a client, then you have to tell them that this client, I'm trying to balance the chakras, I'm trying to seal the chakra, I'm trying to energize the chakra. जब आप chakra cleansing कर रहे हो, तब भी तो crystal को बोल ही रहे हो एक तरीके से. Right. So that is how you just try to put your intention for everything. Basically, you're going for a job interview, you've got a crystal with you, so you're just holding on to it in the keychain and you're saying, "Yeah, okay, let this go happily, अच्छा हो जाए." So the crystal is with you. Any crystal, you're giving it that thought. It's like a friend, na? It's someone's like a mystical character. Ki somebody is trying to help you or give you some amplification for good positive things. Sir, I have a question. Yes. So when you say these crystals help in chakra balancing, does that mean does it have any relation to Kundalini Jagran and Sahaj Yoga? It has a relation to everything. That I will come later in the class, maybe today, or I think we'll be coming to it tomorrow, whereby I'll tell you that all these crystals can be associated with Kundalini, with astrology, with numerology, with palmistry, with any type of thing. You can match it with every other science possible, right? Okay, and what is the name of this crystal and what is the usage? I can't. I think ये गोमती चक्र है. Okay, and what is the usage of this one? This is for overall good luck, overall positivity. It's a समुंदर से मिलता है. It's a seep. It's not Okay. really. It's Yeah, not it's entirely. kind of It's very not beautiful entirely a seed crystal. kind of. It's not entirely a crystal. It's more used in astrology and for good luck overall. ये इसमें crystals में भी लोग इसको design के लिए डालते हैं. So it can be soaked. These crystals can also be soaked, the hard pieces or the powder, in water. जैसे आपने अब एक bucket लिया, गर्म पानी में, for example आपने एक आपने amethyst का piece डाला और उसको आपने, maybe you putting it because I'm trying to say that we are trying to heat the stone now. So we cannot heat it in the microwave, we cannot heat it on a gas, but we can heat it through water, right? अगर आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो गर्म हो जाएगा ना. So in a bucket where there is hot water, you put this and then you take it and put it in a cloth. इस पे ये गर्मी, इसमें गर्म रहेगा कपड़े के through. So you're putting it on your knees, you're putting it on your, wherever the pain is there. Or so this is trying to take away the pain. Because the stone is heated, it will give you that nice feeling on the body. जो हम कई दफा, if you've seen there are a lot of massage parlors which offer hot stone massages, right?
So this is a stone, a crystal. So you dip it in hot water, it gets warm, it gets hot, place it in a cloth and put it on your areas where there is pain. This is used for majority लोग इसको old people के लिए use करते हैं या बच्चों के लिए use करते हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद दवाई नहीं दे सकते, एक लेवल के बाद क्रीम नहीं लगा सकते. People who have diabetes, who have so many other medical conditions, how many medicines can they have? उनको फिर भी pain हो रहा है, फिर भी चल नहीं पा रहे, right? So then this is one of the way to put it in hot water. Amethyst हो गया, white quartz हो गया, rose quartz हो गया, या आपने पानी में डाला और आपने उस एरिया में लगाया, so it will help to get that pain off, to make that person more relaxed, feeling a little better than what he was already feeling. And then another crystal is there which is called rock salt, जो मैंने आपको कल बताया था कि that is also a crystal. तो वो rock salt को आप पानी में डालो, वो तो मिल जाएगा, आपने उसको एरिया पे लगाया. और अगर उसको भी, उसका एक और तरीका है कि रॉक सॉल्ट का पीस लिया, चाहे वो सोप के फॉर्म में हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसे रॉ फॉर्म में हो. दिस कैन बी हीटेड on the gas. How? You take this rock salt, you wrap it in a cloth. Now you put this on the tawa, on the gas. तवा चल रहा है जिसपे आप रोटी बनाते हो. लेडीज को पता है ना, रोटी बनाते हैं ना सब लोग भाई. आजकल तो लॉकडाउन में आई थिंक मेन आर आल्सो मेकिंग, राइट, फुल्का. तो अभी फुल्का भी ऐसे ही फुलाते हो ना, तो ये इसके अंदर क्या है, रॉक सॉल्ट है. इसको तवे पे गरम करोगे आप. अब क्या ये कपड़े के थ्रू ये गरम हो गया. अब now you place it on wherever it is paining, on the knee, on the joints, or on the wherever it is paining, and it is supposed to help the most out of all the crystals. Rock salt is the most helpful for pains, for especially for children and old people, because they have a lot of restrictions for medicines, right? So that is so this is a very good use of doing it. And alum is also used in the same way. Do you know what is alum? Somebody can tell me what is alum? Fitkari. Fitkari, sir. Fitkari. अरे लेडीज को ज्यादा पता है, आदमी को किसी को नहीं पता भाई. किसी आदमी आफ्टर शेविंग के बाद यूज करते हैं. सर मैं बोला, आपने यूज करा है कभी? मैंने बोला था सर, सबसे पहले मैंने ही बोला. I don't know if you heard. A lot of men use it after shaving, right? पानी में डालते हैं उसको क्लीन करने के लिए. Yes. A lot of men use fitkari after shaving. आजकल क्या है कि वो फैशन में नहीं है, but somewhere or the other, if you go to allopathic doctors or alternate doctors, they tell you कि fitkari से गले के लिए गरारा करो. If you have a lot of issues on your face, they say don't use anything else, use fitkari after shaving and all. So वो आप रेगुलरली भी यूज कर सकते हो, फेस पे, बॉडी पे, कहीं पर भी. और फिटकरी को भी आप गले के लिए गरारा एंड गरम करके आप बॉडी के पार्ट्स पे लगा सकते हो, राइट. आई वाज अर्लियर सेलिंग फिटकरी का रॉक सॉल्ट लैम्प्स. जैसे रॉक सॉल्ट लैम्प्स होते हैं वैसे फिटकरी के थे. So they used to look very nice. Right now I am out of stock, but that is an additional way of putting it in your house as a crystal, whereby that fitkari is also removing the negativity in the air around you. So that is another way, mixing it and applying it on the pain area after heating it. Then you can use rock salt powder in home, put powder of other crystals, but this is not really recommended. रॉक सॉल्ट का पाउडर तो आप पानी में मिला के आप सफाई कर सकते हो ना घर में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट अब इसमें एक लेवल और बियॉन्ड हम जा सकते हैं. रॉक सॉल्ट से हमने घर साफ कर रहे हैं हम लोग, दैट इज फाइन, बट we can use powder of other crystals like black tourmaline, white quartz, alum, fitkari in areas which have been closed for a very long time. Factory, hospital, या कोई घर है या कोई एरिया है जहाँ पे कि बहुत ये, if you can read this what I have written over here, ये आप पढ़ पा रहे हो? Is it visible? Yes, sir. Closed factories, houses, building complexes filled with a lot of negativity, where there's a lot of accidents, incidents have taken place, extraterrestrial activities, lot of deaths, suicides,
because that powder, what will that powder do? That powder will remove the negativity of that area. अब आप पूरे घर के अंदर तो क्रिस्टल रख नहीं सकते, पूरे फैक्ट्री में हर जगह नहीं रख सकते, so you can use it in the water to clean that area. स्प्रे कर सकते हैं या सफाई कर सकते हैं. स्प्रे इज सेफर बिकॉज उसमें क्रिस्टल कहीं जमीन पे मिक्स नहीं होगा. पाउडर क्या है, जमीन पे जा रहा है, सो डर है कि कोई इंसान या कोई एनिमल उसको लिक ना कर ले. बट इफ इट्स अ क्लोज फैक्ट्री और अ हॉस्पिटल समथिंग, वी कैन स्टिल यूज इट. So this is another different way of using these type of crystals, you know. Then we will also cover how to, you know, maintain the crystals. I'll just throw it over here. Crystal aroma chakra, how to cleanse. I think we'll do the maintaining of the crystals part tomorrow. Let me tell you that you know, how to choose the best crystal for you, how to choose the best crystal for others, the art of gifting and receiving crystals, and the best crystal for emotional, love, money, health, you know, this issue. So over here, like, see, if you want to gift somebody, so that only depends upon the emotion or the relationship that you have. Rose quartz एक ऐसा crystal है जो बहुत popular है. It's a pink colored crystal, and everybody you know, kind of associates it with love, harmony, relationship, and the heart chakra, right? It's visible. This is rose quartz Ganesh. So say for example, you want to give something to some guy you like. Maybe he's your boyfriend, maybe he's not your boyfriend. Some girl you like, she's your girlfriend, not your girlfriend, you like her. और तो उसको आप ये this crystal is given to harmonize the relationships. A lot of couples who come to me, you know, they're having some issues, so I try कि कोई एक दूसरे को gift दे दे, girlfriend boyfriend को gift दे दे, so it helps in harmonizing because you're giving that intention with that crystal, and it is also a heart chakra crystal. So अगर कोई ऐसा आपका friend भी है तो आपको आप rose quartz दे सकते हैं. And if you receive it from that person, even that is much better. It is said that when these crystals are bought, they are good for you, but when you receive it as a gift, the amplification of the good energy is more because it has come to you as a gift from someone else. So वो negative intention से तो आ नहीं सकता because these are all positive crystals. So that positivity comes along because someone has, you know, gone that extra mile to give it to you as a gift to you. Or say you're giving some crystal, you want to give something to your father, to your mother. So see, अभी normally आप क्या दोगे? आप अपने father को what will you gift? Rahul ji, what would you probably gift your father? In terms of? Say again. In terms of? उनके बर्थडे पे आप क्या दोगे उनको जनरली? मतलब हर साल बर्थडे आता है ना, अब हर साल डिफरेंट गिफ्ट देना है या फिर कितना गिफ्ट दे? आप सारे गिफ्ट की वैरायटी खत्म हो गई, अब कितना साल हो गए, क्या दें? So you'll probably try to gift him something manly, a shirt or something, you know, maybe a pen or mobile or something, right? So we can give them some bracelet also. Right. So now obviously will be in some age, senior citizen. So for him, the main concern would be the stabilization of health. So any crystal that will help him stabilizing his health elements would be. आवाज वैसे काफी echo कर रहा है तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा राहुल जी. So what I'm trying to come is that this is an added advantage. This is giving you a different opportunity or an idea to gift. How you are incorporating the crystals in your life is now by also giving it around. So अब आपको कोई अब आप बोर हो गए हो, हर साल बर्थडे आ रहा है, परफ्यूम दे दे के थक गए हो, अब क्या दो, डिफरेंट क्या दो? अब आपने शर्ट्स भी दे दी, परफ्यूम भी दे दिया, वाइफ को आपने डायमंड भी दे दिया, गोल्ड भी दे दिया, ज्वेलरी दे दी, नाउ व्हाट एल्स? गाड़ी गिफ्ट दे दी कभी किसी को आपने, वाइफ को घर भी एक दफा घर खरीद के दे दिया, नाउ व्हाट एल्स? So now different type of things come in place. Maybe you give them a, you know, tree of life, you know, something that looks really nice. Or you give them a rose quartz crystal, you know, because we're talking about relationships here. We're talking about your friend, we're talking about your father, your mother, your wife. So try to incorporate something which harmonizes. एक आपने गणेश जी दे दिया या इसी में अलग-अलग और चीजें बनी हुई आती हैं, अलग-अलग क्रिस्टल में भगवान जी बने हुए हैं. So this is giving you an extra added, you know, use of things to gift. You can gift a rock salt lamp.
So when you're gifting this, you're also gifting them the benefits of the crystal. It's not that आपने सिर्फ एक lamp दे दिया जिसमें से रोशनी आती है. You've given them something which is giving them some positivity, that something, some positive vibration है उसमें, कुछ एक magnifying power है. So that association of that warmth and love and feeling comes. You can gift a rose quartz to your boss. You can gift a rose quartz to your lover. You can gift a rose quartz to any human being, including your client, because your purpose with all of these people is to get more harmonious relationships. जरूरी नहीं है वो अफेयर या कपल के लिए ही है, आपको एक रिलेशनशिप अच्छा करना है ना उनके साथ, आपके क्लाइंट के साथ. So you will give them something from rose quartz maybe, or maybe which looks like a duck, a fish, you know, depending upon the relationship you have with that person. So when we are gifting it to some senior citizen, right, we will think about their health. Then what would be the best crystal? अच्छा आपने पूछा, it's good. मैं भी यही बताना चाह रहा था. Amethyst. Citrine. Amethyst is a master healer. Citrine, you can gift any crystal, but I am trying to, वही अभी जो question था ना कि senior citizen है तो आप health का सोच के दोगे. So not only have you given him a crystal, say for example you've given him a tree of life of amethyst. ये amethyst का भी आता है. So not only have you given him a beautiful tree which looks nice and you know symbolizes growth, and tree of life symbolizes prosperity, you have given him an amethyst crystal. So you have thought extra. आपने उसको शर्ट अगर दी है तो आपने वो शर्ट में ऐसी क्वालिटी भर दी है कि वो उसकी गुड हेल्थ के लिए है. तो ऑब्वियसली वो शर्ट में तो नहीं है क्वालिटी, तो आपने उसको एक ऐसा पत्थर एक ऐसे फॉर्म में दिया है. गणेश जी के फॉर्म में हो सकता है, शिव जी के फॉर्म में हो सकता है, डक हो सकती है, फिश हो सकती है, ट्री हो सकता है. एंड दिस कैन बी अ नेकलेस आल्सो. आप जब किसी को गिफ्ट दे रहे हो, But sir, when we are gifting it, they are not touching the tree every day, right? Then how does that affect their health? वो भी आगे मैं बताऊंगा. This is then covering their aura, ना? It is around them. I told you how you are going to use the crystals, by touching them on your chakras, by holding them, by taking a bath, by keeping it around in your house. तो वो आपके aura में कर रहा है. तो आप चक्रा और aura ये दो चीजें इसी से ही आप कर रहे हो एक तरीके. So it doesn't matter. So now if you gift something, one of the guys over here, if they gift this to some female, एक तो होता है आपने प्लास्टिक का ले लिया या मॉडर्न ज्वेलरी ले लिया. Now this crystal has some value. It's a rose quartz. So you're giving that added addition thought to your gift. and अपने लवर को दोगे तो अगर right. So how to choose for yourself? This is how you're gifting it. You know, you're maybe receiving it. Right. So this crystal should be kept in which direction in the house if you're gifting it? No or the direction. raw crystals, where can we keep them? No direction required. वो उसके ऊपर मैं आपको वैसे बताऊंगा. There is no direction required, but it is very simple logic. वो आगे एक वैसे पार्ट में कवर हो रहा है. अगर आप बेडरूम में रख रहे हो तो आप हार्मनी का रखना चाहोगे, कपल का रखना चाहोगे. Even if you are single, तो obviously you want a partner, maybe you want to get married, or you want a girlfriend or a boyfriend or whatever it is, right? So you'll keep a rose quartz. You'll probably if you are not well, then you'll keep an amethyst. आपको हेल्थ अच्छा करना है, ओवरऑल आपको अच्छा करना है, तो आप एक व्हाइट क्वार्ट्स रख लोगे. व्हाइट क्वार्ट्स रख लोगे कि ठीक है अच्छा एनर्जी रहेगा. और अगर आपको सेक्रल आपको रूट चक्रा याद है? रूट चक्रा इज द बेस चक्रा, उसका रेड कलर होता है. व्हाट इज द रूट चक्रा फॉर? For grounding and Grounding. Root chakra is giving you energy for what? For doing what? What is the other name of root chakra? Root chakra, base chakra, sex chakra. तो मैंने ये तभी तो आपको वो भेजा था बुकलेट कि आप अगर सिर्फ चक्रास अगर आप लाइफ में अपने क्लियर कर लोगे ना, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा. क्योंकि अब अगर आपका रूट चक्रा, बेस चक्रा, सेक्स चक्रा है, अगर आप उसके अंदर एनर्जी डालते हो तो उसका मतलब आपके अंदर एनर्जी आती है टू प्ले स्पोर्ट्स, you know, to enjoy intimate moments. आपको vigor and vitality दे रहा है for everything whatever you know is considered under that. So that is the base chakra. If you remember I told you कि जो root chakra है, अगर वो आपका balanced नहीं है और आपके सारे के सारे चक्रास balanced हैं,
they will not work fine because root chakra is the king of the chakras. It is like the master chakra which is managing all the chakras. So if your root chakra is not balanced, the other chakras will not work properly even if they are completely balanced. Right? It is the driver. I used this word yesterday that this chakra is the driver. मैंने ये word use करा है. So this is very important कि ये आप इसको याद रखें. तो अगर आप अपने बेडरूम में अगर आप ये रखते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा ना. फिर एक तरीके से, I'm not saying it will always give you, but if it is really around you, it's actually working around your aura, you're connected with it, is programmed and charged. So you don't want that all the time. Matlab, I understand you wanted, probably a lot of couples come to me and I give them, these crystals for, vigor and vitality and their married life and all that stuff. But then I tell them to keep it in a drawer or keep it away. मतलब हर वक्त ही खोल के इतना एनर्जी हमेशा ही रहेगा कि सोना नींद ही नहीं आएगा. And I don't know, I get a little confused. If there was a female today, she spoke to me on WhatsApp. I am not sure if she's in the other class or this class. She told me that मैं पूरी रात ना ये चक्रा meditation play करके सो जाती हूँ, and all of a sudden I wake up and I have sexual feelings and I have a lot of energy and I'm not able to sleep. So can you relate to what I just told? Can you relate? जो उन्होंने बात बोली और मैं आपको बोल रहा हूँ उससे कि आपने बहुत ज्यादा एक्टिव चक्र, खराब नहीं कर रहा, कुछ हार्म नहीं करेगा, बट ये एनर्जी हमें परमानेंट नहीं चाहिए ना. सो बेडरूम में हमें क्या रखेंगे हम? कामिंग क्रिस्टल्स, रिलैक्सिंग क्रिस्टल्स. रिलैक्सिंग क्रिस्टल कौन सा है? ये रिलैक्स करने के लिए एमेथिस्ट, ये रिलैक्स करने के लिए टर्कोइज, ब्लू और व्हाइट क्वार्ट्ज. थर्ड आई के लिए एमेथिस्ट हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं, बट ये रात को ज्यादा यूज नहीं करना बिकॉज आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड. अगर आपका क्राउन एक्टिवेटेड है, आपको एनर्जी रिसीव हो रही है, थर्ड आई आपकी होना, तो आप सो नहीं पाओगे ना. सो देन कीप देम अराउंड, डोंट कीप देम वेरी क्लोज आल्सो. यस संगीता. सर आई हैव वन क्वेश्चन. या सर, जैसे आपने बताया कि थ्रोट चक्र के लिए टर्कोइज रहता है, राइट? तो जो भी 7 चक्रा के हम क्रिस्टल्स हमने ऑर्डर किए हैं, तो उसमें थ्रोट चक्रा के लिए लेपिस लेजुली क्यों यूज हो रहा है? मतलब काफी क्रिस्टल सेट में मैंने ये देखा है. मैम एक ही क्रिस्टल आपके 3 से 4 चक्रा पे यूज हो सकता है और एक चक्रा के लिए 15 से 20 क्रिस्टल है. मतलब आपके थ्रोट चक्रा के लिए ब्लू लैपिस भी है, टर्कोइज भी है, सोडालाइट भी है और ब्लू काइनाइट भी है, एमेथिस्ट भी है. जबकि एमेथिस्ट इज फॉर थर्ड आई एंड फॉर क्राउन, but it is for all of these chakras because if you can associate it very easily by the colors of the chakras, and then when you know the properties, जो मैं भी PDF शेयर करूंगा, आप भी धीरे धीरे यूज करोगे, रिसर्च करोगे. जब आप क्रिस्टल खरीद रहे होगे तो आप पूछोगे किस लिए है, मेरे से पूछोगे. So you will get to know कि बहुत सारे crystals हैं for the same purpose. This is turquoise, this is for throat, but then blue lapis is also for throat. Even amethyst can work, right? So ये इसका फंडा है, if you understood, Okay. So yeah, Sir, I have a question. Sangeeta, Sorry, sir, I have a question. So can we use black tourmaline? take your name ना, at least I can't see कौन पूछ रहा है. Sorry, this is Isha. Sir, I wanted to ask that can we wear a black tourmaline, or keep it under a pillow while going to sleep to prevent some sort of psychic attack, or like if we know that there is someone with negative you can do it. intention. What is black tourmaline for? आपको अगर आपको याद है black tourmaline का one of the purposes क्या है? Protection और grounding. yes, so रात को आप सो रहे हो, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है बैड ड्रीम्स के लिए या आपको जो भी आप साइकिक अटैक्स के लिए, और ग्राउंडिंग कर रहा है, आपके चक्रास को इम्बैलेंस नहीं होने दे रहा है. तो यू कैन कीप इट. इफ समबडी हैज अ बॉडी पेन तो वो एमेथिस्ट अपने पास रख सकता है. अगर जितने भी लोग मेरे जानकार में, क्लाइंट्स में या स्टूडेंट्स में बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो मैं उनके पास एक एमेथिस्ट भेजता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बड़ा भेजूं, बिग एमेथिस्ट. सो इट्स अ मास्टर हीलर, राइट? Okay. तो या संगीता जी बोलिए. Thank you. Good evening, sir. Good evening, everybody. Sir, amethyst आपने जो बोला है, Can you speak louder, Sangeeta? Yeah, sir. Can you keep the amethyst under your pillow or beside your bedside
how are you supposed to बेड keep it? साइड पे रखना इज इनफ। और अभी मैंने बोला कि अगर ज्यादा पेन है बॉडी में तो बेड के नीचे रख सकते हो, पिलो के नीचे नहीं, क्योंकि वो रात भर फिर आपका ओवर एनर्जाइज या ज्यादा एक्टिवेट भी करता रहेगा। तो रात को आपको क्लोज कांटेक्ट में नहीं रखना या डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना। आप रात को एमेथिस्ट पकड़ के सो सकते हो, एमेथिस्ट पकड़ के सो सकते हो, मगर बट अगर आप बहुत अनवेल हो, पकड़ मतलब होल्ड इट इन योर हैंड रादर देन कीपिंग इट ऑन योर बॉडी और अंडर द पिलो। एंड व्हाइट क्वार्ट्ज इज वन क्रिस्टल व्हिच यू कैन यूज फॉर एनीथिंग, बट टू मच ऑफ होल्डिंग इट, टू मच ऑफ कीपिंग इट अंडर योर पिलो और अंडर योर बेड और अराउंड यू, वो आपका एक्टिवेट ज्यादा रहेगा, तो इट्स नॉट इवन रेकमेंडेड, फिर सो नहीं पाएंगे। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I have a question. Yeah. सर आपने जैसे अभी बोला कुछ क्रिस्टल्स ओवर एनर्जाइज भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसी ओपनली रख दे हम, तो इफ वी कीप सम क्रिस्टल इन आवर लॉकर, so would that also over energize and we get more money? Is that possible? Yes. You're supposed to do that. You're supposed to keep citrine. You're supposed to keep citrine in your locker. You can keep rose quartz. You can keep citrine. You can keep iron pyrite. यही तो मैं आपको कल बताऊंगा ना, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इन सब के साथ इसको कैसे मैच करके आप कर सकते हो। जो अभी सैवी जी ने वो दिखाई थी ना, एक सीप दिखाई थी, वो भी आप एक्चुअली उसको आप मनी बॉक्स में रख सकते हो, उसका पर्पस वही है। और उसका पर्पस अदरवाइज पूजा पाठ में आता है, उतारा करने में आता है अपने ऊपर से, और पूजाओं में बहुत चीजों में यूज आता है, राइट। और अगर हम काफी सारे क्रिस्टल्स रख देते हैं, would that have negative effect also? No. There's no negative effect. You can keep 5,000 crystals together, doesn't matter, as long as they are, cleansed and they are programmed and also, मतलब the point is that वो balanced हो, बस वो ज्यादा over energize या ज्यादा लो ना कर दे, otherwise और कोई harm नहीं है, और कोई harm नहीं है। सर एक क्वेश्चन मेरा है, सर मैं विक्रम हूँ, तो सर क्या हम बहुत सारे क्रिस्टल्स को एक साथ चार्ज कर सकते हैं किसी एक आदमी के लिए? आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। वो इंटेंशन है, चार्ज करना तो एक तो हो गया मून वाटर, मतलब वो तरीका मैं बताऊंगा। अगर इंटेंशन से चार्ज करना है, अगर सबकी इंटेंशन सारे क्रिस्टल्स की सेम है तो एक साथ चार्ज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंटेंशन बाय रेकी सिंबल्स और अदर थिंग्स। रेकी सिंबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको रेकी नहीं भी आता वो बस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के या सामने रखकर उसको इंटेंशन डालेगा, दैट्स इनफ। वो रेकी इज अ प्लस पॉइंट। और रेकी बहुत अच्छा, इसको क्रिस्टल रेकी में बहुत एनहांस करता है, मैंने यूज किया है। यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप डिस्टेंट वर्ल्ड ओवर किसी को भी हील कर रहे हो तो आप क्रिस्टल यूज कर लीजिए। सर यहाँ मैं एक पॉइंट आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ। अभी कोरोना से मेरे एक कोलीग हैं जो आईसीयू में एडमिट है, उनके लिए हमने रेकी और क्रिस्टल का ग्रिड बनाया था, तो वो अप्रोक्सीमेटली 15 दिन में फुली रिकवर्ड होने वाले हैं, तो इतना इसका असर है। यस, ऐसे ही हम लोग एमेथिस्ट बेचते हैं, जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो हम बहुत बड़ा एमेथिस्ट बेच देते हैं उनके पास, जिससे कि उनको हीलिंग में हेल्प मिले। मतलब देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग बिकॉज़ दीज आर अल्टरनेट साइंसेस, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ गॉड। गारंटी तो सर इसका इतना रहता है, गारंटी तो इसका इतना रहता है कि जो पेशेंट है वो फील करता है कि something is there extra. Yes, that is true. Through other modalities, when you're adding crystals into your other modalities, the power of the other modalities gets increased, and the vibrations increase, and Reiki or energy healing के through vibrations दूसरे person को महसूस होता है। Sir, I have a question. Sorry to be asking it a little bit late. So can we use black tourmaline in kids' bedroom, or can we give them a bath like you have suggested? Or is it okay to use it for the kids? You can do it for the kids also. Kids also need grounding. They also need protection from, any negativity and all. So that's fine. You can do that. वो psychic attacks, और bachon के लिए तो लोग बोलते हैं ना, काला धागा डाल दो, काला टीका लगा दो. Yes. So if you see, if for every one of you, I'm repeating this thing a lot of times. If you make your core strong in the chakras and the chakras colors, and then you just see the color of the crystals around you, it is very easy for you to incorporate them in your life.
और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जब आप क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज जानेंगे तो एक लेवल एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे अगर रोज क्वार्ट्ज के बारे में हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि रोज क्वार्ट्ज आप देख के पिंक लग रहा है, लव रिलेशनशिप हार्मनी लग रहा है, बट चक्रा कौन से पे काम कर रहा है? ग्रीन, विच इज द हार्ट चक्रा। सो इसका कलर देखकर आप रेलेवेंस समझ रहे हो आप क्रिस्टल की, और इसको चक्रा से काफी क्रिस्टल्स को तो आप चक्रा से बड़े इजीली मैच कर पाते हो ना। लाइक अ पर्पल क्रिस्टल यू आर एबल टू मैच इट विद योर थर्ड आई, और यू आर एबल टू मैच इट विद योर क्राउन चक्रा, or a blue crystal you're able to match it with your throat chakra, right? So that's easy because you know the chakra color and you can see the stone color, so you know automatically कि this has to work on the throat. ये पक्का करेगा क्योंकि कलर मैच है। और बाकी जब आप उसकी प्रॉपर्टीज क्रिस्टल्स की और जाके समझोगे तो अब आपको समझेगा कि ये वाला क्रिस्टल 3 जगह काम कर सकता है, क्योंकि ये क्राउन का हमारा कलर है वायलेट, इधर इंडिगो है और इधर ब्लू है। सो इट इज इन द सेम फैमिली। इन द एंड पर्पल ब्लू फैमिली का ही तो है ना। सो दैट इज वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी इजी। आई एम ट्राइंग टू गिव यू नॉट वेरी हेवी टर्म्स, और you know, I am not talking about any compound you know, chemical composition about the crystals and all. I'm telling you easy way so that after this 3rd day you start using it. You know that this is a no brainer for me. Color है, चक्रा है, मैंने यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्लैक कलर का सबको समझ आ रहा है, नेगेटिविटी, हेक्स, यू नो, ग्राउंडिंग पे मैं बहुत एम्फेसिस करता हूँ, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, यू नो। So is there any precaution that we should take when we take crystals as gift? What if somebody charge it with some negative intention? Is that possible? No, it's not possible. वो पॉजिटिव क्रिस्टल्स हैं, उसको जो नेगेटिविटी करता रहे डजंट मैटर। आपने गिफ्ट ले लिया, थैंक यू, आपका हो गया, आप बस उसको वॉश करो अपने लिए। आप अगर आपको तो पता है ना, आपको तो आज के बाद पता है कि क्रिस्टल मेरे प्रोग्राम हो सकते हैं, तो आप उसमें अपना पॉट डालो, थैंक यू यार मेरे को गिफ्ट आया है, और ये मेरे गुड, हाईएस्ट गुड के लिए है, ये मेरे रिलेशनशिप के लिए, ये मेरी गुड हेल्थ के लिए, डजंट मैटर। These are not really, for example, magic things or any hex things. इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। Okay. No. For example, if somebody is giving you rose quartz and you don't like that person, so what should we do with it? I mean, should we Then clean you it send and that crystal to me. Okay. Okay, sir. और मेरे को काफी लोग बोलते हैं मेरा स्टोन टूट गया है, तो मैं क्या फेंकूं, क्या करूं? मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुतों को बोलता हूँ, you send the courier to me. I will use that crystal in some way or the other. I'll break it into chips. I'll make it into powder. Because I like to experiment with things, you know, make it into new things. तो वो क्रिस्टल अगर आपका वो पिरामिड है, वो अगर टूट गया तो अब वो पिरामिड के फॉर्म में नहीं यूज हो सकता, ये तो पक्का है। बट अगर उसके हम चिप्स बना लें, टुकड़े टुकड़े कर लें, जो आप नहीं कर पाओगे, तो फिर तो वो चिप्स की तरीके से यूज हो सकता है ना। जैसे हम बॉटल में डाल के यूज करते हैं चिप्स को, कैंडल में डालते हैं, बहुत चीजें हैं। और इसका अगर पाउडर बन जाएगा तो पाउडर को फिर दोबारा कैंडल में डलता है, सोप्स में डलता है, तो देयर आर मतलब एंड नंबर ऑफ यूजेस इसका आ जाएगा। सर सोप्स में चुपता नहीं है? नहीं, सोप में मैम 2 तरीके से बनता है, या तो पाउडर डलेगा सोप में, इसका बहुत कम डलता है पाउडर, जो आपकी पता नहीं लगेगा, बस वो आपको उसकी एनर्जी एक तरीके से दे रहा है, या फिर इसका रॉ पीस या इसी का हार्ट शेप पीस उसके अंदर डल जाएगा। तो जब आपका वो सोप खत्म होएगा, सो इट्स अ गिफ्ट टू यू, लव सोप। So after the soap is finished, there is a heart inside. So that heart is rose quartz. तो वो आपको soap तो चला गया, but you know it's given you some memories. So you know it's given you that positive surprise gift. Yeah. So that is how it is used in you know the soap thing. So you know अभी हमने majorly love emotion से related crystal gift के लिए, you know, लेने के लिए या use करने के लिए बताया। अब जैसे money के लिए है, you know, so money का कलर हम लोग, I think world over हम लोग green बोलते हैं। I don't know why, even for the dollar, even for the Indian rupee, it's green, right? That's how it is called. So green का मतलब कौन सा चक्रा हुआ? हार्ट। तो ग्रीन चक्रा अगर हार्ट चक्रा हुआ तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिस्टल कौन सा हुआ? ग्रीन एवेंचरिंग। Rahul ji was the first for giving the correct green aventurine, रोज क्वार्ट्ज क्यों हुआ? क्योंकि वो पिंक है और वो हार्ट चक्रा से मैच होता है।
ग्रीन एवेंचुरिन क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्रीन कलर है, राइट? तो अगर मैलेकाइट इज ऑल्सो फाइन, या दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। वही आपने कलर मैच कर लिया ना, इसका मैलेकाइट इज नॉट रियली ग्रीन, बट या इट इज इन द ग्रीन फैमिली, सो यस यू कैन यूज इट बिकॉज वो ग्रीन कलर की एनर्जी दे रहा है, राइट? सर वैसे मनी Pirates, जो है वो ब्लैक मनी या व्हाइट मनी होता है? हाँ, उसके लिए आप ब्लैक और व्हाइट क्रिस्टल दोनों साथ में रखो, तब भी पैसा आ जाएगा। मतलब this is like a no brainer things that I am telling you, that if you want to use something for money, or if somebody comes to you and he doesn't know उसको चक्रा में क्या है, वो कह रहा है यार मेरे को पैसे का प्रॉब्लम है, तो अब आप ये क्रिस्टल सजेस्ट करोगे, चाहे उसको पहनने को बोलोगे, चाहे उसको घर में रखने को बोलोगे, चाहे उसका चक्रा पे यूज करो, राइट? There is one more crystal which is Sir, if I can interrupt something. golden color का होता है, Pyrite. yes, iron pyrite. आयरन पायरेट। इसका ब्रेसलेट भी हाँ पुनीत के पास है, काफी लोगों के पास इसका ब्रेसलेट गया है। So this is also called fool's gold. Yes, fool's gold. राइट? तो अब भाई अभी पैसा चाहिए तो पैसे वाला पैसे को खींचता है ना, Magnet. अभी if somebody is really rich, he's got an expensive mobile, he's got an expensive car, he's got an expensive clothes, he's got an expensive watch, so why can't he have an expensive crystal? You know, it looks expensive at least, so if it's looking expensive, it better be expensive, you know. There are certain things in the market which has no value, but just because it looks very beautiful, it's very expensive. So this is one of those things, you know. So this is good for money, right? कलर से मैच हो गया। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनको आपको नाम से या उनकी प्रॉपर्टी से आपको पता लग गया, और इनको इजी वाला क्रिस्टल मैंने पीपीटी में भी डाला है, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपको लाइफ में यूज करने के लिए। बाकी आप बार बार वो पीपीटी में चेक कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, स्लोली यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड। अभी आपको अगर 7 से 10 क्रिस्टल समझ में आएंगे तो फिर आपकी नॉलेज धीरे धीरे 25-30 क्रिस्टल में पहुंचेगी। अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि आपको 25-30 क्रिस्टल्स में की नॉलेज में पहुंचाऊं, क्योंकि अगर आप 7 से 10 क्रिस्टल में ही पहले काम नहीं कर पाओगे तो वो 20-25 क्रिस्टल कोई फायदा नहीं देंगे आपको। तो जब तक आप उनको पॉजिटिविटी, क्रिस्टल, चक्रा ओवरऑल यूज नहीं कर पाओगे, तब तक आप आयरन पायरेट और ये सब का कोई यूज नहीं होगा। So even if we go with the core 7 to 10 crystals, we are okay. We can be rich, we can be happy, we can be, you know, getting everything. ये तो next level है कि अच्छा अभी मेरे पास ऑडी थी, चलो मैं बोर हो गया तो मैं मर्सिडीज भी ले लेता हूँ। So अगर आपके पास एमेथिस्ट है, आप हेल्दी हो भाई, कोई नो प्रॉब्लम, बट हाँ यू कैन गो टू अनदर क्रिस्टल। मे बी यू से कि उसकी वाइब्रेशन मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है, या वो महंगा है तो इसलिए मेरे को यूज करना है, या मेरे को डिफरेंट क्रिस्टल भी चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ। सो दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ इट, यू नो। सो नाउ कमिंग टू यू नो द हेल्थ, भाई सबसे ज्यादा ये चार चीजें ही प्रॉब्लम होती है ना। हाँ जी ईशा जी। Go ahead, please. Rahul sir, go ahead. No, Isha, you please. Okay. I just wanted to ask something here. Sir, I don't know if you can see me. I have this, I think it's opalite or it's moonstone. एक तो ये white सा है। कैमरे में नहीं दिख रहा है। Oh, sorry. कैमरे की तरफ। अब दिख रहा है? Can you see Yes. it? Yeah. It's white. I have a heart-shaped pendant, and this came off a earring. It's like a pointed triangle, and I have a ring. I am not sure if they are opalite or the ring has a rainbow shine. इसका फोटो दिखाना व्हाट्सएप में, मैं आपको बता दूंगा ओपलाइट है कि रेनबो मूनस्टोन है कि क्या है। ठीक है सर, ओके। So now I have a question. जो हम गिफ्ट देंगे किसी को, लाइक अपने फादर को किया, या लाइक ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट, तो उनको तो पता नहीं होगा इनके बारे में कि हाउ टू क्लेंज और हाउ टू चार्ज एंड हाउ टू फिल इट विद इंटेंशंस। तो उनको वन टाइम हमने गिफ्ट किया, उन्होंने यूज किया एज अ ब्रेसलेट फॉर्म, तो उनको हमको कुछ बोलना भी पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ? आप अब फादर है, मे बी ओल्ड एज है, या मे बी यू डोंट वांट टू बॉदर हिम, और मे बी ही डजंट बिलीव इन ऑल दिस, और मे बी ही डजंट वांट टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस।
why to make it complicated? You charge the crystal for him and give it to him. If he is comfortable, then you can tell him about it. You can tell him, Papa ऐसे करते हैं, ऐसे इसको साफ करना है, Papa. Otherwise, just give it to him as a gift. You charge it with the intention for your father and let him use it. कभी 6-7 महीने में उतरवा के उसको cleanse कर देना, charge कर देना. या आपने किसी को gift करा तो उसको बता देना. So that's fine. मतलब you have charged it for that person, that's fine. But then, sir, if they don't believe in what we believe, and for them it's just a jewelry. क्या हुआ? अब आपके घर में आज आप कर सकते हैं क्या? Pardon? Distance cleansing कर सकते हैं for them and for their crystal. अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं. If you are a Reiki healer, if you are pranic healer, or if you are an energy healer, or if you are at that level of any type of modality, you can do it. You can cleanse it distantly. मैं तो लोगों का world over healing करता हूँ, cleansing करता हूँ, doesn't matter. But then it won't have any negative effect, right? If I give something as a gift to someone, but he's not cleansing it because you don't know anything about it. No, doesn't matter. Even if it doesn't cleanse, it's not going to give any negative effect. It's then going to be used as a jewelry or anything. अब जैसे ये necklace है, अब इसको jewelry के तरीके पे lady पहन रही है. Lot of ladies don't know it when they're buying it in the market. This is not that. This is only a person who is a chakra healer or a energy crystal healer is selling this. This is being sold in the market like a fashion jewelry. अभी ये प्लास्टिक का होता, अगर ये प्लास्टिक का होता तो ये 200-300 रुपए का बिकता. Just because it is crystal, it is 1200, 1500, 1300. So why? Because वो क्या बोल के बेचेंगे, मैडम ये असली स्टोन है, इसको ना रोज क्वार्ट्ज बोलते हैं, ये अच्छा असली स्टोन है, ये ज्वेलर्स यूज करते हैं. इन गोल्ड एंड डायमंड इसका और हायर क्वालिटीज आता है. इट इज यूजिंग ज्वेलरी. तो ये एक पीस 15,000 5,000 का होगा, एक टुकड़ा. वो हायर क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसको जेमस्टोन की तरह शेप दी गई है, पॉलिश करा गया है, तो वो 5,000 का हो गया है. So does not matter. Your purpose is to gift it. That's it. Doesn't matter. और कई चीजों में नहीं समझ में आता. Like आप घर वालों को मेडिसिन देते हो, they don't understand what is the medicine for. They just say यार मेरे लिए मेडिसिन बना दो और मुझे दे देना. So this is the same way. अगर आप उनको as a healing के purpose से amethyst दे रहे हो, green aventurine दे रहे हो money के लिए, green aventurine is also for blood pressure, green aventurine is also for blood flow, green aventurine is also for any skin allergy, green aventurine is also for heart chakra, green aventurine is also for money and also for blood pressure. I think I just told you. तो आप उसके कोई भी उस पर्पस से दे रहे हो तो आप चार्ज करके दे दो. और हम करते नहीं है घर में कि बच्चे के लिए कोई पूजा है तो हम कर लेते हैं, हस्बैंड के लिए पूजा है, वाइफ के लिए पूजा है. So it doesn't matter. मतलब these are very simple no brainer things. You don't really need to be really confused or afraid about them. सर टाइगर आई के बारे में थोड़ा सा बताइए. टाइगर आई प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है ना, एंड व्हिच चक्रा इज इट यूज्ड फॉर? द रूट चक्रा. Tiger eye can be used for the root chakra, for the sacral chakra, and for the root, sacral, and और आप बताओ solar plexus. स्वादिष्टान, solar plexus. Yes, तीनों में यूज हो सकता है. वो प्रोटेक्शन स्टोन है और the color is somewhat not really yellow or not really reddish, but it's a mixed. Yes, it's a mixed tone of these colors, right? So can we make someone wear tiger eye permanently, because they sometimes say that the vibrations of tiger eye is very strong? So can someone wear it permanently for protection? We can wear it permanently. वो कई दफा आपको लगता है कि बहुत थकान लग रहा है या बहुत एनर्जी आ रही है तो उतार दो. वो मतलब आपके चक्रास या आपके ऑरा के साथ वो क्या रेजोनेट कर पा रहा है, तो डजंट मैटर. उसका कोई हार्ड इफेक्ट नहीं है. मे बी आपको हो सकता है थकान लगे, मे बी एक्चुअली होना उल्टा चाहिए कि आप एक्टिव हो जाओ. वो आपको पाँव में दर्द है तो कम हो जाए. So it's okay. It's good for eyesight also. Tiger's eye is good for eyesight also, even for business, for protection. So it's okay. You wear it. नहीं कुछ सूट कर रहा है या लग रहा है ओवरवेलमिंग लग रहा है, या कई लोग वो एनर्जी को ले नहीं पाते हैं तो हार्ट में पाल्पिटेशन हो रहा है, ज्यादा एनर्जाइज हो रहा है या लो हो रहा है, तो रिमूव इट. डजंट मैटर. कुछ और पहन लो. कोई ऐसा हार्ड और वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं है कि मैंने ये पहना तो मेरा ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं. वो आप ही के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई आपको अदरवाइज कोई आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस पे वर्क नहीं कर रहा. सर ये रेनबो मूनस्टोन के बारे में बताएंगे? मैम मैंने वो पीपीटी में दिया है.
अभी if we tell about each and every crystal ना, तो फिर ये क्लास कभी खत्म नहीं होगा. PPT में मैंने दिया है, but otherwise आप you free to ask me on the groups for any crystal, तो मैं आपको write up भी दे दूंगा उसका. और मतलब जो crystal का नहीं भी है ना write up, आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगा. Sir, I have not received the PPT and I am also not in the group yet. No problem. You WhatsApp me. You have my number at least, so I'll add you. Yes. So will we be? आप कुछ पूछना चाह रहे हो? Sir, right now I want to like heal my brother because he's having some post-COVID symptoms. So I don't have the bond right now. So I have the amethyst ka raw form. So can I do with that like bond You ka can kam? do it with any other crystal. You can do it with any other crystal which looks like a wand, looks like a pencil, or you can do it with your hand or your palm, or just your mind also. So that's fine. And second question, you showed that infusion bottle for the elixir. So how to use that? Like, what is the use of that in elixir? बेस्ट तरीका बताता हूँ. अगर आपको कोई मोबाइल चलाना नहीं आता तो आप जब खरीदते हो चलाना आ जाता है ना. So get that bottle and you'll get to know. I have so many those bottles in my house. I'm just kidding. उसमें elixir वाली बॉटल ना जो मैंने फोटो भेजे वही वाला ना. Yes. उसके अंदर ये वाले टम्बल्स डालो ना उसके अंदर और उससे पानी पियो बस. उसके कोई 24 घंटे उसको 24 घंटे पानी में नहीं रखना. हाँ, ज्यादा क्रिस्टल डालने की जरूरत नहीं. 4-5 आवर्स नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए रखना है. मतलब आधा घंटा 1 घंटा ठीक है, मोर देन इनफ. बदल दो उसको पानी को, या उसको सुखा दो या उसको निकाल लो. परमानेंट डाल के नहीं भूल जाना कि जी जिंदगी भर इसमें पानी भरता रहेगा और मैं पीता रहूंगा. डोंट डू दैट. Thank you. So yeah guys, I think Rahul ji, you want to ask something? No, I want to add something if you permit. Rahul ji, आप I think you're using some mic or something जो कि बहुत एको कर रहा है. अभी तक पता है आपका कुछ भी समझ नहीं आया. एको कर रहा है. Okay. हाँ, अभी बोलिए राहुल जी. Yeah. It's still echoing. राहुल जी, we can't hear you. एको आ रहा है. आप लैपटॉप पे हैं या मोबाइल पे हैं? I have connected my Bluetooth to my laptop. I think Bluetooth के बंद करके बात कर लीजिए आप. Okay. Is it better now? Yes. Is it better now? Yes, it is better. Yes. Please say. So last year, what we had experimented, there is a nine crystal pyramid chip. Sir, you might be aware of that. So COVID patients के पिलो के नीचे वो रखा था, so उससे भी recovery fast होता है. Yes, pyramid रखा था ना, pyramid. 9 crystal pyramid आता है. 9 pyramids. वो मतलब 9 तरीके का क्रिस्टल था उस पिरामिड में. Yes. अभी मैंने बीच में थोड़ी देर पहले बोला था ना, पिरामिड बेड के नीचे. So it because see pyramid, what does a pyramid do? अभी हमने ये इजिप्ट के पिरामिड और ये सब पिरामिड्स बड़ा सुना है ना. मंदिर के ऊपर भी वो पिरामिड शेप होता है, गोल्ड शेप होता है. पिरामिड generates a lot of energy. Right? So yes. So what does a pyramid shape do? Pyramid shape generates energy for us. तो आपने उसको अपने बेड में या अपने बेड के नीचे या अपने बेडरूम में या अपने आसपास रखा, तो आप उस वक्त हीलिंग मोड में हैं, तो आपके हीलिंग को वो मैग्नीफाई करेगा. सो राहुल जी का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल वाजिब है. आप पिरामिड उसमें यूज करिए. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ बॉडी पेन, आई हैड चिकनगुनिया सम टाइम बैक, some years back. So I started keeping a crystal a pyramid under my bed. मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास. I can't find it right now, but I kept an orgonite. I kept a big orgonite under my bed. जैसे ये pyramid है, इसका बड़ा रखा था मैं. So yes, you can do that for everyone. I have this pyramid which I use for meditation as a cap. So it's very like I do pyramid meditation only, so it's very useful. See, this is a new thing that we guys have got to know.
मतलब I had heard that I had heard the term, but I never thought कि वो सर पे pyramid रख के आप meditation कर रहे हो. So Yes, yes. so it's a see so the use of the pyramid, you know, practically वो pyramid meditation ही कर रहे हैं, and they're keeping the pyramid shape, hollow shape on the head, and it's basically I'm very easy for me to understand कि वो generate करके energy दे रहा है उनको. And I don't know if you guys have heard, this was a weird rumor, which I don't know if it was real or what. This was a rumor that Michael Jackson used to sleep in a pyramid bed or something, in a pyramid room or something. I don't know. I've heard it long time back. It's right. It's right. It's right. It's absolutely right. Right. Even from the society I belong, it's called PSSM, Pyramid Spiritual Society Movement. So we have pyramid houses. Like in Delhi, the person has made a pyramid house. So they sleep, they meditate under that. So we have so many valleys around the world to meditate under the pyramid. So this is something not every... I got to know today. You're talking about Patriji? Patriji, you're talking yes, about Moini? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the word you just used, Patri? Sir, no, it's a name of... Sir, he's a a grandmaster. His name is Brahmarishi Patri. Patriji is the founder of PSSM, and he's spreading meditation, spreading a pyramid meditation basically among the world. Acha. Great. Sounds good, yeah. So yeah, but sir, how do we use the pyramids for us at home? How do we use it? आपने जो भी एरिया में आपको एनर्जी लो लग रहा है, आपने वहां पे एक पिरामिड रख देना है, अलग अलग जो आपको क्रिस्टल का रेलेवेंस उसके साथ लेकर. नहीं समझ में आए तो व्हाइट क्वार्ट्ज का रख दो, नहीं समझ में आए तो एमेथिस्ट का, व्हाइट क्वार्ट्ज का, 7 चक्रा का पिरामिड आप वहां पे रख दीजिए. So the pyramid is basically generating energy in that area. अगर आप एक किसी पेपर का भी पिरामिड बना के रखोगे ना, that will also help. Pyramid is that useful. So corners में रखने हैं या कहीं भी रख सकते हैं या? Anyway, it doesn't really matter actually. वो वास्तु वगैरह में होता है कि इस डायरेक्शन में ये पिरामिड रखो या बैलेंसिंग करो. बट अदरवाइज आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस उस जगह पे एनर्जी चाहिए ना आपको, तो वो एनर्जी के लिए आप उसको कहीं भी रखो, अपने ऑफिस के डेस्क पे रखो. उसमें कोई ऐसा डायरेक्शन का मतलब वी डोंट वांट टू पुट एनी डायरेक्शन पार्ट इनटू इट. वो हम लोग वास्तु कर रहे हैं या हम लोग फेंग शुई में है, तो वो अलग तरीका हो गया, अलग साइंस हो गया. When we are talking about pure crystal healing, there is no confusion. मेरे को सिंपली है, मेरे को अपने ऑफिस में एनर्जी चाहिए. मेरे ऑफिस में ऐसा लगता है कि यार जब भी आता हूँ नींद आती है, उबासी आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, कुछ भी पता नहीं क्यों. जब इस कमरे में जाता हूँ नींद आती है, जब मैं इस कमरे में जाता हूँ कोई काम ही नहीं है, मैं सो जाता हूँ. तो मुझे वहां पे क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए. So I am not bothered about direction right now. I am bothered about that energy, that positivity, that activity in that room. So if I want that, then I'm going to use a pyramid there. So that's a very simple way of putting it, you know. अगर आपका बच्चा है, वो स्पोर्ट्स में है, आपको उसको लिए और फिजिकल एक्टिविटी है, एनर्जी नहीं है या एनर्जी चाहिए और, तो आप पिरामिड रख लो उसके आसपास. और फिर पिरामिड का यूज भी कितना हो गया, आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी हीलिंग में चाहिए, उसके बेड के नीचे रखेंगे आप, उनके पास रखेंगे, जैसे राहुल जी ने भी अपना एक्सपीरियंस अभी बताया. सो या that's the way of using it. And you were talking about cleansing home, जो हम यूज करते हैं जैसे पोचा टाइप, तो उसमें हम कैसे करेंगे सर? क्रिस्टल्स का थोड़ी देर रखेंगे उनको 2-5 मिनट्स और फिर वो भी कर सकते हो आप. क्रिस्टल का पानी बना के पूरा घर क्रिस्टल के उस पानी से साफ कर सकते हो. आप क्रिस्टल का पानी स्प्रे बॉटल में डाल के पूरे घर में स्प्रे कर सकते हो. और आप रॉक सॉल्ट का पाउडर डाल के घर को साफ कर सकते हो. एलम का पाउडर डाल के साफ कर सकते हो. इवन कैम्फर को पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करके आप पूरा घर साफ कर सकते हो, स्पेशली अगर घर में मक्खी या मच्छर का प्रॉब्लम. Right. So is there anyone who's not asked anything till now? I would really like to hear your voice, at least if I'm not able to see you guys, because we are going to wrap up now. So is there anyone who shyly wants to ask? This is Sushma. Hi Sushma. Sir, actually you told no, the
putting crystal in the water to take the hot massage. For that, we should use raw crystal or the tumble one. Both is fine. Doesn't matter. वो ये है कि raw का ये है कि if you're not handling it तो वो थोड़ा उसका वो उतर सकता है थोड़ा material, तो it's okay. You can use both. Doesn't matter. Raw का usually raw का ना energy field थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है. Well, it's not always that it is true that for every raw only the energy field is more, but usually that's how it is. So you can use both. Sir, Upasana ji. Oh, yeah. Sir, I actually wanted to ask you, how do we differentiate between sodalite and lapis lazuli? Lapis lazuli के अंदर golden lines होती हैं और sodalite में नहीं होती. So I've also seen कि sodalite में शायद थोड़े blackish spots भी होते. So that way also can we differentiate? Yeah, that's one of the ways. See, once you start using crystals, once you buy crystals and once you get into your collection, तभी समझ में आएगा. मेरे को तो अभी कई दफा फोटो में देख के नहीं समझ में आता कि ये कौन सा है. अभी मेरे को ईशा जी दिखा रही थी तो I said मेरे को WhatsApp पे फोटो भेज. So you have to start using it ना. वो आप differentiate आपको मैं बता दूंगा जब आपके पास वो दोनों चीजें होनी भी चाहिए तब फायदा है. So don't worry. अभी start exploring these 7 to 10 crystals. Sodalite तो 7 चक्रा की किट में आता ही है. Okay, thank you. हाँ जी राहुल जी. Can you help us with understanding the families of different crystals? राहुल जी, what of crystals? आपकी वॉइस एको हो रही है दोबारा आपके ब्लूटूथ से. Family of crystals. ऐसा कोई फैमिली ऑफिशियली आपको सही बात बताऊं तो है नहीं. सिर्फ ये बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा वो टर्म यूज कर लिया है कि जी रोज क्वार्ट्स है तो ये हार्मनी का है, लव रिलेशनशिप का है, और ग्रीन क्रिस्टल हार्ट चक्रा का है, तो ये एक फैमिली हो गए, राइट. बट इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है. लाइक अगर हमारा सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा दोनों रेड और ऑरेंज कलर को रेजोनेट करता है तो इसका मतलब जैस्पर और हमारा कार्नेलियन एक फैमिली हो गए, राइट. अब इसमें एक तरीका और है फैमिली का. एक्वामरीन इज अ वाटर बेस्ड क्रिस्टल, मतलब वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. टाइगर्स आए वुड एलिमेंट यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो आप जितने क्रिस्टल अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते होंगे वो एक फैमिली हो जाएंगे, जितने क्रिस्टल वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते होंगे वो एक फैमिली हो जाएंगे. एंड कार्नेलियन एंड जैस्पर रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी. तो जितने फायर एनर्जी के क्रिस्टल होंगे रेड कलर के होंगे वो एक फैमिली हो जाएंगे. बट हमें इसका कोई एक्चुअली स्पीकिंग फायदा नहीं है क्रिस्टल हीलिंग में. भाई आज हमें कोई डर ही नहीं है कि फायर को और वाटर को और एयर को और अर्थ को हम मिला सकते हैं. इन द क्रिस्टल वर्ल्ड वी कैन मिक्स ऑल ऑफ देम. सो द रेलेवेंस ऑफ कॉलिंग देम अ फैमिली और कॉलिंग देम हार्मोनाइजिंग क्रिस्टल्स or resonating with each other really doesn't make a difference. It is just another textbook way of putting certain crystals. एक extra page या extra PPT या extra chapter बनाने का है कि भाई ये earth element है, ये water element है, ये fire element है. उसका ये फायदा आप उठा सकते हो कि जहां पर आपको fire element उठाना है, आपको पता है कि ये 6 crystal fire element के हैं, तो आप उनमें से कोई भी यूज करो या सारों को यूज करो. कहीं पर आपको वाटर एलिमेंट बढ़ाना है वास्तु में, या आपकी बॉडी में वाटर आपका कम है, तो आप सारे वाटर के क्रिस्टल यूज कर लो. सो अदरवाइज इन द क्रिस्टल वर्ल्ड नॉट मच ऑफ रेलेवेंस एज अ फैमिली. What I had heard was Aventurian family या तो फिर एगेट का फैमिली है, पायरेट का फैमिली है. That's what I would say. Doesn't matter. मतलब द पॉइंट इज दैट हमने बस वो उसमें जात पात बना दिया है, वो कोई उसका यूज नहीं है. जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बीइंग हु इज बोर्न, यू डोंट नो इज अ हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई unless until you get into that tag.
So that's the same way these crystals are. There is no tag really required कि ये pyrite family का है, ये aventurine family का है, या water family का है, या fire family का है, unless you are using it in वास्तु. वास्तु में आपको फायर एलिमेंट बढ़ाना है तो आप कार्लेनियन यूज कर लोगे, अगर आपको वाटर एलिमेंट बढ़ाना है तो आप एक्वामरीन यूज कर लोगे. आपको अगर ग्रीन वाला एरिया जोन, ग्रीन जोन आपकी या अर्थ जोन बढ़ानी है तो आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर लोगे या टाइगर्स आई यूज कर लोगे. तो वहां पर you can still use it practically by dividing them into families. In the crystal world, you don't need to do it. Doesn't matter. If you have a water retention problem, it's not that you will only use aquamarine. You could use a turquoise also, or you could use an amethyst also. और अगर गले में जैसे कोल्ड है, अगर फेस पे, नोज में, थ्रोट में जैम्ड है, तो अब वो तो वाटर एरिया है, बट वहां पर आप फिर कार्नेलियन क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज आपको कोल्ड है, राइट? यू वांट टू हैव हीट in that area. Warmness, yes, right. Snehal ji, thank you for speaking something. At least कुछ लोग और भी बोल रहे हैं, so I am really glad. Sir, actually जो मल्टी कलर क्रिस्टल होते हैं, जैसे हाउलाइट हो गया, टाइगर आई हो गया, तो उनको किस चक्रा पे प्लेस कर सकते हैं हम? कलर से रेलेवेंस ले लो ना. हाउलाइट का कलर क्या है? वाइट ग्रे है जैसे, बट जैसे टाइगर आई है, टाइगर आई ब्राउन है ना. ब्राउन है तो ब्राउन, अभी मैंने बताया था कि वो ब्राउन का नियरेस्ट कलर क्या है? सेक्रल, रूट और ब्लैक, सोलर प्लेक्सस. सो दे कैन बी यूज्ड इन ईदर ऑफ दीज. और आईज के लिए यूज कर सकते हो. आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो, आई का चक्रा नहीं किसी को पता, तो आई के लिए टाइगर आई. ओके. एंड हाउलाइट सर? हाउलाइट आप ओवरऑल, हाउलाइट इज फॉर हायर कनेक्शन. तो हाउलाइट आप सारे चक्रास के लिए यूज कर सकते हो और हायर कनेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो. मेडिटेशन, फॉर अदरवाइज. सर एक जनरल कंफ्यूजन था सर. हाँ जी, बोलिए. So will getting a booklet of which crystals are not supposed to be exposed in front of fire or sunlight or in water. मतलब how to There is no फायर से सारे क्रिस्टल को बचाना है. मैंने आपको मिला है पीडीएफ. you are in the group, you got the PDF? Yes. So उसमें बेसिक क्रिस्टल्स के बारे में तो है. पानी के लिए क्रिस्टल वैसे तो सेलेनाइट ही है, बाकी मैं उसका भी एक दो दे दूंगा. सोनल को शायद बुकलेट नहीं मिली. आप जो भी ग्रुप में है, ऑब्वियसली आप किसी ना किसी ग्रुप में तो हो ना, चाहे आप बेसिक वाले में हो चाहे एडवांस में हो. तो आप मुझे उस ग्रुप में लिख देना जिसके पास बुकलेट नहीं है. मैं उस ग्रुप में बुक दोबारा डाल दूंगा. तीन पीडीएफ मैंने डाली है, आई थिंक कल आज डाली है, तो मैं तीनों दोबारा डाल दूंगा, तो सबको दोबारा मिल जाएगी. जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर लेना, राइट? और ये वाटर वगैरह वाला क्रिस्टल्स का आप मेरे से अलग से पूछ लेना. मैं उसका भी राइट अप दे दूंगा. अभी मैंने सर आई एम नॉट इन द ग्रुप, प्लीज ऐड. आपका कोर्स स्ट्रांग करना है. Yes, I had one question. Sir, I am not in the group. Please add me, sir, because I am not getting those PDF. पूजा जी, आप कौन से ग्रुप में हो व्हाट्सएप के? सर मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ. I messaged you yesterday actually and today also. अच्छा ठीक है, आप अभी मुझे मैसेज करना अभी चैट का, हमारी मीटिंग एंड होने के बाद, ठीक है? Sure, sir. Okay, thank you, sir. Right. So guys, सर एक लास्ट क्वेरी है सर. हाँ जी, बोलिए. अच्छा सर, ये जो 7 क्रिस्टल्स हमको मिले हैं 7 चक्रास के, तो उनके नाम बता देंगे एक बार प्लीज? I cannot see you, ma'am. I cannot. What's your name? ज्योति छाबड़िया. अच्छा, ज्योति जी आप थे नहीं, बेसिक में नहीं थे क्या? बेसिक में वो लाइन से मुझे नाम नहीं पता उनके. अच्छा, आपको चक्रा का कलर पता है? हाँ जी. What is the chakra color of the crown chakra? White. Crown? Violet. 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 Right? Vibgyor, violet. So violet, तो हमारे पास उस चक्रा सेट में कौन सा चक्रा का क्रिस्टल है वायलेट से पर्पलिश कलर का? मुझे नाम नहीं पता. ये एमेथिस्ट है? Yes, amethyst. Yes. मैं आपको रिफ्रेश करा रहा हूँ ना, ताकि आप खुद ही सही जवाब दो तो आपको पक्का याद हो जाएगा. राइट? अब एक और क्रिस्टल है जो ब्लूइश कलर का है,
हाँ, लैपिस lazuli है। ब्लू लैपिस हो गया, राइट? उसमें हल्की सी गोल्डन सी लाइन है, हल्की सी शाइन है। अब एक और क्रिस्टल है जो डार्क ब्लू कलर है, ऐसे लगता है जैसे ब्लैक ही है शायद, डार्क ब्लूइश, दैट इज सोडालाइट थ्रोट। अच्छा, राइट? ओके। एंड अभी उसके नीचे कौन सा चक्र है? सोलर प्लेक्सस, नहीं हार्ट चक्र, सॉरी। राइट? पहले तो सब लोग कैमरा ऑन, कल आई एम टेलिंग यू, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा ना वो पॉज पे चला जाएगा। I don't care if you guys need to go to a, get your face massaged or put some extra creams or, I don't know, brush up your hair, doesn't matter. But tomorrow the cameras needs to be on. I need to take a selfie. Come on, मतलब मेरे को भी तो boost करना है कि यार 40 लोगों ने मेरी बकबक सुनी है और बोर नहीं हुए, सोए नहीं और डिस्कनेक्ट करके भागे नहीं। Thank you, Karthik. Good to see you for the first time. Good to see Birva, Shilpa, Snehal. Sir, I have one question. अभी ये एक क्वेश्चन चल रहा है मैम, एक क्वेश्चन चल रहा है अभी, वो मैम का पहला चल रहा है। उसके बीच में थोड़ा मैंने सबको हार्ड लव दिया है, तो आई थिंक 90% कैमराज ऑन हो गए हैं। अब कल 100% हार्ड लव देना पड़ेगा तो 100% कैमरा ऑन होंगे। थैंक यू रजनी जी, ग्रैटिट्यूड टू यू, डोंट फील शाय। कार्तिक भाई तुम तो बिल्कुल विराट कोहली ऐसे लग रहे हो। कौन? कार्तिक इज लुकिंग लाइक विराट कोहली। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, अब कौन सी मैम थी जो सवाल पूछ रही थी, पहले ये बताओ। मैं नहीं, मैं तो है, बट कौन है मैं? ज्योति छाबरिया। ज्योति जी, कैन आई सी यू? आई एम स्टिल नॉट एबल टू सी। सर आप ऑन तो हो कहाँ पर भाई? इतने सारे शक्ल दिख गई, अब तो कंफ्यूजन हो गई। कैन समबडी हाईलाइट हर? आई थिंक, और आई कैन ओनली डू दैट। येलो You are the host, so I am the host. Okay. Seriously, I'm lost today. चलो, anyways. So अभी हाँ ज्योति, now I can see you. Yes. Hi. Okay. So Good, अभी ये चक्रा पे आए हम लोग। आपने थ्रोट कर दिया था, अभी इधर क्या है? हार्ट चक्र। कलर ग्रीन। राइट? इसका क्रिस्टल का कलर येलो है, येलो एवेंचुरिन। नहीं सर, नहीं। हाँ तो आप ही बताओ ना फिर। ग्रीन एवेंचुरिन। हाँ, so now you will remember this 100%। मतलब अब आप जिंदगी भर ग्रीन चक्रा नहीं भूलोगे, चाहे आप बाकी सारे भूल जाओ। Right. So this is a way to make you memorize, because you have corrected somebody. So now you are sure कि ये बक्का सही रहेगा, ये ग्रीन ही रहेगा जिंदगी भर। ऊपर से आके भगवान भी बोलते हो ग्रीन रहेगा, तो वो ग्रीन एवेंचुरिन हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से चक्रा पे? सोलर प्लेक्सस। Solar plexus is yellow. Yellow, हाँ. So the crystal, yeah, Sangeeta ji is showing us the crystal. So the crystal is yellow aventurine. Okay. Right. उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं sacral. हाँ. उसका कलर ऑरेंज। ऑरेंज तो मतलब उसमें ऑरेंजिस क्रिस्टल है हमारे पास, कार्नेलियन होगा चक्रा स्टोन में। और उसके नीचे जा रहे हैं, संगीता इज शोइंग अस ऑल द क्रिस्टल्स, राइट? तो उसके नीचे हमारे पास अभी उसके बाद कौन सा आ गया? रेड। तो रेड भी उसमें एक क्रिस्टल है, वो जैस्पर है। सो अभी सबको आपने ये एग्जांपल देखा कि ज्योति जी ने इतना अच्छा सवाल पूछा, और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपके चक्रास का कलर और नाम, मैं कह रहा हूँ नाम भी छोड़ो, कलर ही अगर आपको समझ आ गया तो अब आपको आपको मेजॉरिटी क्रिस्टल पता लग गए। और अगर क्रिस्टल का नाम नहीं भी पता तो आप एटलीस्ट रूट के लिए रेड चक्रा, तो रेड क्रिस्टल तो उठा ही लोगे ना। So this is how it is. So it kind of did a revision kind of for everyone in a way कि आपको दोबारा चक्रास के कलर के साथ आपको अपने 7 चक्रा का सेट समझ में आ गया, right? And who remembers the other 3 chakras, the 3 hidden, neglected, secret chakras that I told? Soul star, stellar. Soul star. Star, stellar. And
Third star. Earth star. Yes, अर्थ स्टार. और बाकी चक्रा कहाँ है एक्स्ट्रा? हाथ में. यस, राइट. मतलब सर आपने हाथ वाले चक्रा के नाम नहीं बताया थे. हाथ वाले चक्रा का नाम है हैंड चक्रा. That's it. See, these chakras, मतलब अभी बहुत लोग हैं हमारी क्लास में आज भी, और मेरी कल की क्लास में भी थे, और मेरी रोज एक एक कोई ना कोई क्लास चल रही है, और वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आकर मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर मैं एक रेकी हीलर हूँ, मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं रेकी 3rd लेवल पे हूँ, मैं प्राणिक हीलर हूँ, और अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज का नाम लेने के बाद वो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर मैं रेकी मास्टर होने के बाद भी मुझे आज तक ये 3 चक्रा के बारे में नहीं पता है, मुझे बताया नहीं गया है, बिकॉज nobody really tries to understand the relevance or use them. आज आपको एनर्जी आ रहा है तो वो 2 चक्रा यूज करके उसको हम 10 गुना क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्यों हम उसी लेवल पे चलना चाहते हैं? And why are we not using the earth star chakra at the same time to ground myself? At the same time, why am I going to ground myself later when I will say I am not feeling well, या मेरा एनर्जी ज्यादा हो गया या लो हो गया या मेरे को घबराहट हो रही? So this is a secret mantra or a chakra. So from now onwards, if anybody you meet who talks about these chakras, तो ask them कि do you know Krishna? उसने बताया भाई, कुछ सीखा था या कहाँ से पता लगा भाई, बताओ मुझे. So this is like a cult secret for you guys. Even hand chakra, I don't see anybody talking about. यार ये तो बड़ा बेसिक सी चीज है. वो जो कौन है अपना आयरन मैन कहाँ से मारता है? Tony Stark. And all these Marvel stories, one of the last Marvel books में वो सारे कितने छोटे छोटे gemstones हैं. Stones, mind stone, soul stone. Yes. पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया उनसे. 6 stones. Right, and that those movies have the largest number of following. The maximum number of people are watching them. They are the highest grosser in the world. So कुछ तो relevance है ना, which we obviously, I know we all believe in it anyways, but I'm just trying to put it into perspective कि अगर कल को कोई बात करता है, so we don't need to argue, we don't need to explain, but we have a point कि यार this thing is happening around the world. So why are we missing on to these chakras, or why are we not understanding the power of these right? Sir, like you said, this Marvel series Thanos का जो आपने example दिया, so all these metaphysical things, this pseudoscience, this alternate therapy, you name it. So like for 5-6 days, I have been either indulging in searching more of it, or in ending up in having a panic shopping. But few YouTube videos which I watched, actually they give insights जिसमें मुझे contradictory चीजें सुनने को मिली, जिससे मैं काफी depletion feel हुआ एनर्जी का. So it was very bad to hear negative things about crystal, that these are just nothing, good for nothing. These are just helpful for placebo effect. So maybe you are more experienced. Can you please help us counsel? The easiest way to not get that negativity and not let that affect you is by not watching them. अब आज आप हॉरर मूवी, आपको डर लगता है तो हॉरर मूवी देखने में मजा आएगा, रात को नींद नहीं आएगा ना, तो हॉरर मूवी नहीं देखोगे आप. अब आज मोदी, I'm not political and I don't really like to talk about politics at all, but say for example, अब ये टॉपिक बहुत है जो आज मोदी जी को सारी दुनिया लव कर रही थी, बट आज आधी दुनिया हेट कर रही है. तो अब आप why will you want to rack your brains with that person? Modi is good, Modi is bad, doesn't matter यार, let it be. उसका perspective है, उसको भगवान में मानना है नहीं मानना उसकी मर्जी है ना. आप मैंने सर जनरिक YouTube में सर्च डाला था, does crystal really help or something like that. See, that is the reason why people are still coming to these classes, going to teacher who can teach you, और जिसको भी नॉलेज है, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो फिजिकल क्लास हो, जो भी हो. वरना यूट्यूब पे तो फिर सब कुछ भरा ही पड़ा है ना, सब कुछ ही है. रोटी बनाना भी सिखाते हैं वहां पर, आटा गूंदना भी सिखाते हैं, फिर भी आटा इन दी एंड गूंदना सिखा सकती है आपकी मदर ही है.
वो आपको YouTube नहीं सिखा सकता. So इसीलिए आज YouTube पे दुनिया के कोर्सेज हैं, but you want to go to someone with whom you can interact. रिकॉर्डिंग तो मैं भी आपको दे ही रहा हूँ ना इसके ऊपर ऐप पे, बट आपको इंटरेक्शन चाहिए. मेन पॉइंट है आपको इंटरेक्शन चाहिए. मतलब आज मैं अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में बता रहा हूँ और अगर मैंने आपको इस क्लास में बोल दिया कि भाई साहब आपको अगर अट्यूनमेंट चाहिए तो ये क्रिस्टल आपको निगलना पड़ेगा, तो आप मेरे कहने पे उसको निगल लोगे. वो मेरी वैल्यू है ना. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर. अदरवाइज वो यूट्यूब पे बोलेगा कि भाई साहब ये क्रिस्टल अगर आप अपने बेड साइड पे रख के सोओगे ना तो 40 दिन रखो, यू विल डाई. तो यू विल only get that negativity in your mind and probably not believe it. That is why you're asking me. But if I tell you today and or on the third day of the class कि आपको ये क्रिस्टल ना भाई साहब अपने कान के पीछे इतना ये चिपका के रखना है, तब आप क्रिस्टल लीडर जिंदगी भर बनोगे, तो मे बी यू विल डू इट. Because you see the results that people are getting from what I am doing, or you've built some trust in me, or the way I am teaching you, you are not dozing off, you're not getting bored. आप लोगों में से कोई भी मैंने उबासी मारता हुआ नहीं देखा. तो इसलिए आप लोग विश्वास कर रहे हो, So it is about the confidence that I have in the things that I am telling you, or the ease of explanation that I am putting forward, without using any of those stupid terminologies or all that hi-fi funda combinations to give you something which is out of this world, whereby when I can be very simple and I can make sure that with this only 3 days of class, this goes into your lifestyle, this goes into your daily practice forever. So why not do it in that way? Why to put in formulas and try to complicate it? I am just trying to put this thing in your life, and I am telling you this is an open science. You can combine it with 5,000 modalities that there are in the world. So simply positive crystals हैं, positive vibration को increase करते हैं, negativity को stop करके convert करते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये हमारे एक ऐसे अंकल हैं या ऐसी आंटी हैं जिनके पास जब भी जाओ ये हंसते हुए मिलेंगी और हमेशा अच्छी बात ही करेंगी. आप बोलोगे ना आंटी वो करंट लग गया, आपका शीशा टूट गया, आपका लॉस हो गया, तो शी विल बी हैप्पी. डजंट मैटर है, कोई बात. शी इज गोइंग टू गिव यू दैट वाइब. शी इज ओनली गोइंग टू फीड यू दैट फूड और फूड ऑफ थॉट और गिव यू गुड थिंग्स वाइब्स. सो दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर. So even if there is negative people around you, it could be your family members, it could be your boyfriend, husband, your whatever wife also, or anybody. So doesn't matter. You try to get positivity from here. So वाइफ से याद आया, कोई वाइफ अट्रैक्ट करने का कोई स्टोन है क्या सर? जैसे रोज क्वार्ट्ज तो लव अट्रैक्ट करने का. रोज क्वार्ट्ज ही है वाइफ को भी अट्रैक्ट करने का, as the primary crystal, और ग्रीन एवेंचुरिन है. वो चक्रा से रेलेवेंट हो गया ना. चक्रा के साथ क्या करोगे? आई मीन शादी के लिए, शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए, शादी करने के लिए रोज क्वार्ट्ज. ओके. बाकी वो एक दो और क्रिस्टल्स हैं, वो बता दूंगा मैं आपको, वो लाइक अ कॉम्बिनेशन और समथिंग, बट अदरवाइज रोज क्वार्ट्ज इज द मोस्ट पावरफुल फॉर ऑल ऑफ दीस थिंग्स. अब आप उसमें इंटेंशन डालोगे ना तो वो उसलिए काम करेगा ना. अब आप इंटेंशन डालोगे कि यार मुझे मेरी 10 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में जाएगा. उसका तो वो तो पॉजिटिव आपको एम्पलीफाई कर रहा है, तो फिर अब आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए. So I am glad that nobody wants to run away from me, or nobody is asking me to, bhai sir जाने दो, sir खाना खाना है. I saw people yesterday and today they are eating food while they are in the class. So I am glad. मैंने पिन पॉइंट नहीं करा क्योंकि मैं किसी को वो कॉन्शियस नहीं करना चाहता था, but it was a good thing to see. हाँ जी राहुल जी, कुछ कह रहे हैं आप? Yeah, I would like to add to Mr. Punit's question that if he wants to connect to someone, just write on a piece of paper with a blue ink and or a green ink, and put that piece of paper under some pyramid in the east direction. So you will. वो ग्रिड का पार्ट है, हम लोग ग्रिड्स में वो करते हैं. Yes, yes. This would be one of the answer. Otherwise, use a red jasper and lapis lazuli pyramid. उसके नीचे फोटो प्लेस करो, बीच में रोज क्वार्ट्ज रखो. It will improve the relationships.
Yes. See, these are that is a part of the grid thing. मतलब मैं कल आपको grids का photos दिखाऊंगा, बट अभी जब तक आप क्रिस्टल ही यूज नहीं करना आता आपको, क्रिस्टल क्या कर सकता है आपके लिए, आपके चक्रा के लिए, दूसरे बंदे के लिए, ऑरा के लिए, जगह के लिए, तो ग्रिड्स के लिए हम लोग रेडी नहीं है. सो दैट विल कम लेटर ऑन. That is why all you guys are in touch with me through the groups or something, so that once all you guys are ready, so the next level is that we'll take you to a grid class, because बहुत उसमें तरीका है. मास्टर क्रिस्टल्स है, कनेक्टर क्रिस्टल्स है, ग्रिड का डिजाइंस है, ग्रिड की शेप्स है, ट्रायंगल है, गोल है, ट्री ऑफ लाइफ है. मतलब इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. मतलब आपको लगेगा भाई ये अभी मैं ऑनर्स बैचलर्स बीकॉम कर रहा था, अभी साइंस कर रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, फैशन डिजाइनिंग. सो इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट अनलेस एंटिल योर कोर इज स्ट्रांग, तो आप वो ग्रिड में क्या लगाओगे आपको नहीं समझ आएगा. पिरामिड लगाना है कि बॉल लगाना है कि पेंसिल लगाना है, और नीचे लिखना क्या है, इंटेंशन क्या लिखना है. उसको इंटेंशन तो आपका इतना बड़ा हो सकता है, मेरा उसके साथ अच्छा हो जाए, वो मेरी बात सुने, वो मेरे से लड़े ना, नाराज ना हो, मेरे को उल्टा जवाब ना दे, और मुझे खाने में मिर्ची ज्यादा ना डाल के दे. बट अब उसका सबका एक सिंगल इंटेंशन बन सकता है, जो राहुल जी को ज्यादा बेटर पता है. मतलब आई थिंक इज यूजिंग इट, राइट? आप ये यूज कर रहे हो ना, इंटेंशंस और ये सब कर रहे हो, तो उसका एग्जांपल राहुल जी भी एक दे सकते हैं कि वो एक सिंगल लाइन में भी बन सकता है फॉर्मेशन, क्योंकि इतना बड़ा कहाँ लिखोगे, वो सेंस नहीं. सो वो एक अलग पार्ट है which now you guys have an idea about. So you have something to look up to कि हाँ, अभी जब हम क्रिस्टल हीलर बनने के बाद जब हम एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, जब हमारे को बैक ऑफ द हैंड की तरह याद होगा कि कौन सा चक्रा है, कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो फिर हम ग्रिड्स के ऊपर जाएंगे. सर इसमें मैं शायद इसको आपकी पूरी टीचिंग जितनी हमने 2-3 दिन की, उसमें एक चीज 2 चीज शायद मुझे बहुत आसानी से समझ में आई, जो सबको समझनी चाहिए. किसी भी तरह का हीलिंग हो, चाहे सेल्फ हीलिंग हो या दूसरों का हीलिंग हो, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो हम उसको नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप उसमें मैं अपने आप को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. दूसरा स्टेप उसमें हम हीलिंग जो क्रिस्टल है जिससे हम हील करना चाहते हैं जिसकी प्रॉब्लम को, उससे एनर्जाइज करते हैं. और तीसरा, जैसे हमने हील किया और उस हीलिंग पावर को मेंटेन करने के लिए हम कुछ ऐसा एनर्जी देते हैं, हाँ ऐसा एनर्जी देते हैं कि वो मेंटेन रहे. जैसे मान लो मुझे कहीं उंगली पे चोट लगी, तो क्या करता है, पहले उसको क्लीन करेगा, फिर उस पर दवाई लगाएगा, फिर उसके बाद उस पर पट्टी बांध देगा ताकि वो दवाई और वो असर वहां पे मेंटेन रहे. तो हीलिंग किसी भी तरह की हीलिंग. एक और एग्जांपल है, अब आपने वेट लूज करा, तो अब वेट लूज करने के बाद आप क्या करते हो? मेंटेन करना. तो आपको उस एनर्जी को डू इट एवरी डे, तो वो हम हर रोज वो करते हैं. तो इसमें इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि जैसा आप हर बार बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल सीधे से सोचते चले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम उसको इस तरह से मान के चलें कि मुझे नहीं पता होगा या मुझे इतना कंफ्यूजन है. आपका बेस्ट ये रहा इस सेशन का, आपका बेस्ट ये रहा कि आपने कहा कि एसोसिएट विद द कलर्स, विद योर चक्रा कलर्स, विद योर क्रिस्टल कलर्स, जो सबसे आसान है. मैं नाम, वही आपकी बात है, मैं नाम 500 नाम जान सकता हूँ सभी क्रिस्टल्स के. 500 नाम मैं जान सकता हूँ, वो आप कहीं भी बुक में भी पढ़ लेंगे. 500 तरीके उसके हो सकते हैं यूज करने के, लेकिन इन द एंड आप कहाँ आएंगे? इन द एंड आप उस क्रिस्टल के कलर के साथ आएंगे, उस चक्रा के कलर पे. वो सबसे बेसिक पॉइंट जो आपने बताने की कोशिश करी, और वो मुझे लगता है कि हम सबको उसमें सारी कंफ्यूजन को छोड़ के उसको हमें पकड़ लेना चाहिए. Yes. Thank you for summarizing it in a way. Most welcome, sir. Thank you. You've kind of summarized the crux of my way of. I don't know. I don't like to use the word teaching. My way of my the crux of me imparting my knowledge to you guys or passing it on. I don't like to be called as a teacher or sir or guru or anything. I'm just trying to pass on my knowledge or the information, and honestly speaking,
I would say 99% of my knowledge is experience based. मतलब मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़कर रट्टा मार के या उसको याद करके कुछ नहीं बता रहा हूँ. This is my life experience of the way I have incorporated healing, tarot, astrology, numerology, and crystals, and compassion or passion towards these things, or empathy and things like that in my life. So I'm just passing that thing. मतलब easy रहे जो लाइफ में डालना. बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये मान लो हम एक चीज पे हम कंसंट्रेट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा. जैसे आप इतनी सारी आपने मोडालिटीज की बात की, हम एक मोडालिटी पे खड़े होकर सोचेंगे कि दैट इज द कंप्लीट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली और फॉर माय कस्टमर, तो वो मुझे नहीं लगता कि हम कंप्लीट कर पाएंगे. जैसे बहुत सारे लोग रेकी करते हैं, रेकी के साथ क्रिस्टल करते हैं, क्रिस्टल के साथ एंजल हीलिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी और वो सब बहुत सारे. तो मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग. आप एक मोडालिटी दूसरी मोडालिटी को एनहांस करती है मेरे हिसाब से. राइट, दैट इज ट्रू. अभी मेरे को भी तो कितने चीजें नए मिल रहा है. काफी लोगों ने इधर somebody was telling me about the hypnosis thing. I am doing hypnosis सर 30 सेकंड में. और भी एक दो मोडालिटीज मुझे यहाँ पता लगी. अभी आज ये पिरामिड वाला पता लगा, पिरामिड मोडालिटी, द पिरामिड हीलिंग. मोहिनी जी ने बताया था ना, आप मोहिनी जी ने पिरामिड का बताया था. So I am also getting to know new things every day. So it's a good thing. Juhi ji is guiding me for the books thing, how to probably get them published and all. So I am also learning new things. So that's a good thing, right? So thank you guys. अभी आपके घर वाले घर पे लॉकडाउन में हैं, तो सब लोग आपको आई एम श्योर मिस कर रहे हैं कुछ ज्यादा. एंड वो थोड़ा ज्यादा वो ये नाम सुन के पूछ रहे होंगे कि भाई क्या सिखा रहे, भाई कौन सा बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं. बस अभी ज्यादा लंबा हो गया. So let's take a break for today. So let's meet up tomorrow, and tomorrow is our final class. So I would recommend कि let's keep the questions at the end. और मेरे को सारा मैं इम्पार्ट कर देता हूँ कल का सारा, और आप लोग क्या ना उसको रेडी रखिए और आखिरी में पूछिए, चाहे वो मेरा पार्ट खत्म भी हो गया और डज नॉट मैटर. एट एनी गिवन टाइम वी कैन गो बैक टू इट. सो that'll be good, right? तो सर एक इसमें रिक्वेस्ट ये है आपसे कि कुछ जो कॉमन ग्रिड हैं हम लोगों के लिए यूजफुल, जो कॉमन ग्रिड हैं, आप प्लीज उनको किसी नेक्स्ट क्लास की बजाय अगर आप कल हमें कुछ 5 मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा ग्रिड्स का कल. सारी ग्रिड्स का पिक्चर्स, काफी ग्रिड्स का पिक्चर दिखाऊंगा. बट मतलब मैं आइडिया दे सकता हूँ, मैं उसको सिखा नहीं सकता हूँ कल. और अभी मेरे हिसाब से नॉट एवरीबडी, पीपल हु आर प्रॉब्ली इन लॉट ऑफ अदर हीलिंग मोडालिटीज, दे माइट बी रेडी, बट मे बी ऑलमोस्ट 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोग अभी ग्रिड्स के लिए रेडी नहीं है. थैंक यू सर. राइट. सो टेक केयर गाइस. गुड नाइट. Thank you, sir. Good Bye. night. See you. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Yeah, see you guys later. Bye. Bye bye. Good night.